किसी के कान का नहीं लग सकता ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां मसरूर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, फाइनल डे है सॉरी। और सेमीफाइनल और फाइनल हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। हमारे पीछे कनाडा की टीम रेडी हो रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि कनाडा के सदर साहब कामिल अहमदिया मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जितनी देर तक टास्क का टाइम है हमारे पास, हम कनाडा के फेस और सदर अहमदिया कनाडा को थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से नाजरीन, ये सदर खुदाम अहमदिया कनाडा हैं, जिनको जिन पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो हम थोड़ा सा इस्तेफादा हासिल कर लें। इनकी मौजूदगी हम जो है वो नाजरीन के लिए फ़ायदामंद साबित हो। सदर साहब से मैंने अभी पूछा है कि ये कल ही तशरीफ़ लाए हैं अपनी टीम को बैकअप करने के लिए और उनका मोराल हाई से हाई करने के लिए। तो सर साहब कैसे हैं? सफर कैसा रहा आपका? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो पहले से प्लान था कि अचानक? नहीं नहीं, प्लान था पहले। अच्छा, पहले हाँ से जी, हाँ जी, प्लान था। पहले से प्लान था। तो आपकी दोनों टीमें माशाल्लाह आगे चली गई हैं नेक्स्ट राउंड में या? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा ओवरऑल कह लें, तमाम इंतजाम के हवाले से बड़ा मजा आया देख के। मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट माशाल्लाह, में अच्छा छुट्टी मिल अच्छा। रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से, मेहमान नवाजी के हवाले से और अरेंजमेंट्स के हवाले से अल्लाह ताला जज़ा दे तमाम वॉलंटियर्स को, मैनेजर्स को। तो बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ हम होस्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुर्बानियाँ कबूल करे। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, आज फिर पूछ लेता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि आपका मुल्क काफ़ी वाइड एरिया पे है, काफ़ी बड़ा मुल्क है। तो क्या सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी कि कोई प्लेयर किसी पार्ट में है, कोई किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है। तो कुछ रह भी जाते हैं इस लिहाज से कि वो आ नहीं पाते। क्या इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। कनाडा में कह लें, विद इन कनाडा 5 आवर्स की फ्लाइट भी है। हमारे कुछ प्रोग्राम वैंकूवर में, टोरंटो से कह लें 5 आवर की फ्लाइट है। फिर फेरी रीजन है वो 4 आवर की फ्लाइट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारे मौसम वैंकूवर भी ट्रैवल किया था और फेरी में वहाँ जाके भी प्लेयर्स के उन्होंने ट्रायल लिए। और वैंकूवर से हमारे साथ 2 प्रोग्राम है जो शामिल हो चुके हैं। लेकिन फेरी से उस तरह की हमारे साथ नहीं हो सकी। बहरहाल मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं अपने एरिया के हवाले से। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाती है कि तमाम प्रोग्राम को शामिल किया जाए। जज़ाकल्लाह। वैसे आपस वहाँ पे आपका अपना इससे पहले टूर्नामेंट होता है सर, या कोई रैंकिंग ऑनलाइन आप लेते हैं या मैचेस करवाते हैं आपस में या ट्रायल्स होते हैं? क्या उसका क्या रखा हुआ है क्राइटेरिया? हमारे वहाँ पे जो कनाडा की टोरंटो में एसीसी के नाम से हम एक लीग में रजिस्टर है। अच्छा अच्छा। हमारा अपना क्लब है एसीसी के नाम से। और हम टोरंटो में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह वैंकूवर में भी हमारी टीम रजिस्टर्ड है। और सैस्काटून में भी रजिस्टर्ड है और कैलगरी में। तो उन खुदाम के हवाले से हमारे पास स्टैट्स उनके मौजूद होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है अच्छा वहाँ पे अच्छा। लोकल लीग्स के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे आना होता है तो इसके लिए स्पेशल फिर ट्राई आउट्स भी कॉल किए जाते ठीक हैं है ठीक है। ताकि उनको दोबारा अलग किया से जा जज सके। किया जाता है बिल्कुल उनको। ठीक बिल्कुल। है, बहुत शुक्रिया। अभी नाजरीन थोड़ी देर में टास्क असल में शुरू होने वाला है। हम सदर साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारा कमेंट्री बॉक्स, छोटा सा कमेंट्री बॉक्स सामने है, तो जैसे ही आपको मौका मिले तो ज़रूर तशरीफ लाएं इंशाल्लाह और हमारे साथ ही अगर बैठ जाएं। लेकिन आप बैठेंगे नहीं क्योंकि आप आए जिनके लिए उनको छोड़ के नहीं आ सकते, नहीं, लेकिन आप जज़ाकल्लाह। आइएगा। और हम आपसे जो है वो गाहे बगाहे अपने ख्यालात का जो आप इजहार करेंगे वो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खास दुआ की दरखास्त है कनाडा टीम के लिए और दोनों टीम्स के लिए। दोनों टीमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें हाँ, और बेहतरीन खेल हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये खास दुआ की दरखास्त है। ताहिर साहब थे, सदर खुदाम अहमदिया कनाडा, जो कल यहाँ पे अपनी टीम के लिए तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह सर साहब, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं ग्राउंड की जानब। अब देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अभी
मेरा ख्याल है एक टीम थोड़ा सा लेट हो गई है, जिसके इंतजार में खड़े हैं दोनों अंपायर, यासर और दूसरे अंपायर आपने देखे बाहर जा रहे हैं, अभी आएंगे अंदर तो आपकी बात भी करवाएंगे। सेमीफाइनल होगा ये इंग्लैंड की टीम, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इंग्लैंड की टीम, और यहाँ पे कनाडा की टीम जो है वो दोनों ग्राउंड में वार्म अप हो रहे हैं। और नाजरीन हमारे साथ आज इंशाल्लाह महमूद साहब, मिर्ज़ा महमूद साहब भी हैं मेरे राइट साइड पे, और ये भी आज मेरे साथ रहेंगे सारा दिन। इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये आ जाएं, तो ये आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम दोनों मिलके जो मैचेस के हाल हैं वो लाइव जो आपको पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह for here. Good morning and welcome to all our viewers from across the globe. As you can see, the two teams are preparing here for the semi-final of the Masroor T20 International Cricket Tournament. Canada, who've won this tournament 5 years, have got a phenomenal side. To give you an idea, right, some of the talent they've got. One of the guys, one of the guys who's playing for them is Yasir Mahmood. He's played in the Under-19 World Cup. All right, their captain Raza sadly could not make it this year. He's played for Canada as well. And in Ansar Jamal and Tasif, they've got bowlers who played a lot of cricket for under 19 in Pakistan, are now based in Canada. So a lot of great talent here, and I'm sure I want to first of all thank my fellow host Mubarak here, because for the last 4 or 5 days he's been doing this commentary alone, and I'm delighted to be back with him and say for everybody for what he's done, and the entire team here, Fareed, Saab, Sheikh Saab, yourself, they put in, please remember them in your prayers, because these guys have put in a lot of effort over the last 6 days to provide you with some really good commentary and a lot of
नाजरीन, हमारे साथ इस मैच के दोनों अंपायर्स मौजूद हैं। यासर साहब हैं और इनको तो आप सब जानते ही होंगे, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। सब जानते हैं इनको, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने रबा में, और यहाँ भी आकर इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। यासर साहब, कैसा रहा आपका ये टूर्नामेंट? और काफ़ी मैचेस में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे और उस ग्राउंड में, साथ वाली ग्राउंड में अंपायरिंग कर चुके हैं, और जर्मनी की टीम से आप टूर्नामेंट भी काफ़ी खेल चुके हैं मेन प्लेयर के एजाज में, तो कुछ कहें हमारे नाजरीन के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी तक ये 12वां टूर्नामेंट है। 11 टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी को रिप्रेजेंट किया इस साल। जो मसरूर टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, वो किसी भी सेंस में हो, बाती खिदमत के लिए, तो क्रिकेट के साथ एक लगाव है। बस अंपायरिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है। सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सारा कुछ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर और अच्छे नोट पे इख्तिताम पजीर हो। जी नाज़रीन, सेमीफाइनल के दूसरे अंपायर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तारफ के साथ आपको अपने व्यूज के साथ जो है महसूस फरमाएंगे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हारिस मेहर शाह। और या सो फार सो गुड। मौसम सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ठंड है लेकिन बारिश नहीं है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज और अल्लाह की ब्लेसिंग रही है कि पूरा वीक ड्राई रहा है। बाकी जिस नाम पे है उस नाम पे तो सही होना ही है इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा हुआ कि जितना बड़ा मैच होता है उतना बड़ा प्रेशर भी अंपायर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे आप नर्वस हैं या ठीक हैं, कॉन्फिडेंट हैं? नर्वस तो नहीं बंदा होता खुद फील्ड में, जब आप खेले हो तो फिर वो नर्वस तो नहीं होता बंदा। वो ये होता है कि बस एक ज़हन में होता है कि अच्छे बुरे डिसीजन किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन बस बेसिकली आपने न्यूट्रल रहना। बस ये हमारी कोशिश होती है। बाकी अब अच्छे बुरे दिन तो अलीम डार ने भी देखे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, ये तो है। ये तो ऑब्जर्वेशन उस वक्त जितनी पॉसिबल है वो रख के ही अंपायर फैसला करता है। नर्वसनेस कोई नहीं होती, ये है कि सब अपने भाई हैं, जहाँ से मर्जी दुनिया के किस कोने से मर्जी हैं। तो दूसरी टीम का इंतजार था, हारिस साहब वो आ चुकी है कि नहीं? हाँ जी, वो बस ऑन द वे हैं। वो अब मेरे ख्याल से हम ये बस 2-3 मिनट में हमने टॉस करवा देना है और इंशाल्लाह 9:30 बजे 9:30 पे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जज़ाकल्लाह हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। ये हम मेरे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कनाडा की टीम जो है वो फील्डिंग प्रैक्टिस कर रही है, और दूसरी साइड पे आपको जो नज़र आ रही है वो यूके की टीम है। दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे ही हम टास्क जो है वो होगा तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको लाइव टास्क जो है वो दिखाएंगे। Assalamualaikum. I hope you can see me. Just moving over to the other ground here now, and the match in the second semi-final on the nursery ground is between Australia, who you would imagine are very, very good, and Germany, who've got a huge amount of Asian talent, primarily from Pakistan, and have won this tournament as well historically. So I'm just taking a walk over to the ground to say hello to the players and to give you a quick insight of what is happening in the second match here. So just making my way here to the ground. I'll just go and say
a quick hello. Doing their final preparations, the Australian team. जी नाज़रीन, as you हमारे can see. साथ जो नर्सरी का ग्राउंड है साथ में Finals day बिल्कुल is really उसमें भी Having मैच been here होने जा twice रहा है myself, और हमारे I can tell you the body is creaking. You know, it's quite. You've spent 5 days in the field, playing in various games, and it is a great pleasure to be here on finals day. Believe you me. All right. Assalamu alaikum. Could you tell me who's the Australian captain? Usman Butt. Is he here? Yeah, he's here. He's doing some stretching now. All right. Yeah. Okay. How have you found this? Can you introduce yourself, please? My name is Wasim Ahmed. Hi, Wasim. Assalamu alaikum. Walaikum Lovely to meet you. Where from Australia are you? Sydney. Sydney. Yeah, Oh, it's a beautiful ground. All right. Right. And how have you found the tournament so far? Oh, it's going really good. Yeah? Outfields are fast. Right. And lightning outfield here, and weather was all right because whenever we come. Yeah, to it's been rain cold. and Yeah. It's cold, but Yeah. thankfully. It's And not you've been raining. joined by your colleague here. Yeah. He's Tawheed from Adelaide. Okay. Brisbane, Australia. From Brisbane. Yeah. Okay. Right. How are you enjoying it here? Yeah, it's cold. First time here? Yeah, first time. It's Yeah? enjoyable. Yeah. Rounds are a bit harder than Australia, Okay. but all round we're doing good. Pitches are good. Sometimes you just got to analyse how it is and Yeah. see what's And who do you play for back home, can I ask? I play for South Brisbane. Cricket South Club. Brisbane Cricket Club. And who do you play for? I play for the Sydney second grade. Okay. Could you tell me who your captain is? If I could quickly just have a quick. He's doing because he was doing toss and he's. Yeah. I'm You just can gonna. go to him. I'm just gonna go to him. Thank you, Jen. Good luck today. He's a bit busy, but if it's not official, then Okay. All right. just give us Good luck. Good luck. Yeah. Good luck. I'll just come and say hello to the German team as well. I'll just say hello to the German team as well. They're coming over here and doing their stretches, and just wanted to come and say hello to some of them to see how they're getting on. And I may switch language if I can. All right, and just say quickly. Assalamu alaikum. How are you today? I'm very fine. Very Yeah, fine. lovely to see you in the Germany team. How's the tournament been for you? Very good. First of all, introduce yourself to our viewers. My name is Nasir Basa from German team. Yeah. I'm all-rounder Yes. and I'm enjoying very well. Yeah. This tournament, the weather was not too good. The whole tournament today, I think, it's not too windy. Yeah. So we're gonna enjoy the weather. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी टॉस के लिए दोनों कैप्टन जो मौजूद हैं और हम भी यहाँ मौजूद हैं एबे रिक्रिएशनल क्रिकेट ग्राउंड में। यहाँ पे सेमीफाइनल जो होने जा रहा है वो कनाडा की टीम और इंग्लैंड की मेन टीमों के दरमियान ये सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो दोनों कैप्टन्स यहाँ पे मौजूद हैं, अंपायर मौजूद हैं, रूल्स और रेगुलेशन बताते हुए। अभी टॉस आपको लाइव दिखाया जाएगा। और ये कि मैंने आपको अभी देखा जो फाइनल सो प्लीज बी दैट्स ऑल इट्स नॉर्मल क्रिकेट है लंबा है यहां पे हो रही है आज को देखने वाले को लगेगा यार अच्छा ऐसा मैच। कनाडा के कैप्टन हैं मुबारक जैया साहब और शाकिर साहब हैं इंग्लैंड के कैप्टन। कॉइन को उछालेंगे शाकिर, कॉल करेंगे कनाडा की टीम ने टॉस जीता है हमारे साथ और 9:30 स्टार्ट बॉल फर्स्ट का जो है वो फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं? ठीक है, टॉस आपने जीत लिया है? जीत लिया हमने। नहीं। फिर पहले बॉलिंग करेंगे अच्छा। क्योंकि जो विकेट लग रहा है थोड़ा सा मुझे गिला लग रहा है हाँ। और थोड़ा सा किसी घास भी है, तो थोड़ा सा बॉल मुझे लगता है कि विकेट में मतलब रुक के आएगा और थोड़ा सा शायद स्किड भी हो। हाँ ऐसा ही है कुछ।
जी जी बिल्कुल ठीक है। आप अभी चूंकि अपनी टीम के लिए जाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा आपका गुज़श्ता मैचेस और इसको कैसे देखते हैं? Alhamdulillah, we had a good start and then we had a very bad upset and then that woke us up and Alhamdulillah we're ready for the semi-final. And So right. you know this Canada is strongest team in this tournament. So how you manage with your squad? If I'm very honest, we're very confident. Okay. They're missing one of their star players, the one who's won them all the tournaments, Okay. and they're under pressure because they don't have it. So And how you see your I just asking about two players. Yeah. One of Shazad and one Safwan. Yeah. How you used to because you know in previous matches Yep. I can't see the good performance from as expecting especially from Safwan. Yeah. So I mean, I've seen Safwan play. I mean, he's a new talent for us. Yes. And He's very nice just player. before the tournament, he Yeah. scored 150 Yeah. in just 60 balls. So you know, we're confident. He's done it once so far in the tournament, and I'm confident he'll do it again. Thank you so much. Thank Best you. of luck. Thank you. Thank you very much. नाज़रीन ये थे कैप्टन यूके की टीम के जो अपने व्यूज और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अभी हम थोड़ी देर में ये टूर्नामेंट का मैच जो है सेमीफाइनल जो है इस टूर्नामेंट का वो शुरू होने जा रहा है और हम इंशाल्लाह आपको ये लाइव मैच दिखाएंगे। और दूसरी जानिब जो मैच हो रहा है
छोड़ दो ये है ना, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी नाजरीन, जैसा कि आपको बताया था कि कनाडा ने टॉस जीतकर इस सेमीफाइनल के मैच के लिए पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया है और इंग्लैंड ने बैटिंग का फ़ैसला किया है। राफे हैं फेसिंग जो करेंगे और नॉन स्ट्राइक पर बिलाल हैं बैट्समैन इंग्लैंड की जानिब से। मुबारक जोया हैं बॉलर, 15 नंबर की शर्ट में आपको नज़र आ रहे, जिन्होंने अभी बॉल पकड़ी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ आज मेरे साथी कमेंटेटर जो हैं, ये आपको मुबारक जोया नज़र आ रहे हैं जो ठीक खैर बारिक साहब हैं बॉलर, और मेरे साथ मिर्ज़ा महमूद साहब काफ़ी अरसे बाद मुझे ज्वाइन किया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि पहले ओवर से वो स्टार्ट करें कमेंट्री, और टीमों के लिए जो है वो उनका तारफ़ भी साथ साथ जितना वो हो सके करवाते चले जाएं। जज़ाकल्लाह महमूद साहब, आपके पास है माइक, तो आप शुरू कर दें प्लीज़। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum to all our viewers from both the UK and across the globe. I would imagine it's a very early morning start for the Canadian viewers, because they're 5 hours behind the UK time. So unless they're really keen and wanting to get up very early, we've got the semi-final here at the Abbey Recreation Ground between Canada and the UK team. Canada, who have won this tournament 5 times now, won the toss, elected to bowl first, and coming in and bowling to Bilal just outside the off stump was a bit of outswing Dot there. ball. Was a really good start for the Canadian team. All right, they've been here several times before. The ground seems to be beautifully laid out. I mean, it really is set out. I was out there viewing it earlier on, and it looks really pleasant and a good toss to win. But you never know in cricket. So in he comes, he bowls, leaves the ball outside the off stump, and Bilal just carefully monitoring proceedings, and I think quite rightly just getting his eye in to see what the bowler is doing, with the ball swinging early in the morning as it will do. With an overcast morning. Bowling from the Battle Fatou road end is the Canadian opening bowler, pitched into the Yorker, and this could be the first run. Amazing backing up there. For those of you who saw it, there were 3 Canadian players backing up, but the UK are up and running, and Bilal will be feeling a lot better. All right, Rafe will be now facing from the other side, and Bilal. It was Rafe who was facing, so I apologise. It will be the left-hander Bilal. Yes. Who'll be now taking on. And this is a good ploy by the UK, because by having a right and left-handed opening team, it disrupts the bowler's line, and straight away you can see the Canadian bowler has now changed his stance, and he will be coming from around the wicket. So the field remains pretty much the same. We've got a slip, we've got a gully, a point, cover, mid-on, mid-off, mid-wicket, comes in, bowls, and Bilal just glides that rather nonchalantly towards the wicket-keeper, who picked it up on the first bounce. And I just suspect there that he may have got a touch on that, because the way the fielders reacted, right? But it gives him an eye in. All right, as an opening batsman, you're always conscious of the first few deliveries, and I can see why he sort of played that sort of tentatively. Bowling, beautiful shot, an extra cover. Bilal absolutely nailed that. But again, great fielding. You're allowed 2 fielders outside the perimeter
in the first power play, and Bilal actually will be feeling a lot better with that. That was a phenomenal, glorious cover drive, and the fielding position was absolutely brilliant. All right on the sort of it's like a sort of fly cover that they've got. In comes Bilal down the leg side, and they come through for the leg by leg, going down the leg side. The umpire from Germany is a neutral umpire, but as always, you see such great sportsmanship from all the teams involved. So the score after the first over, I believe, is 4 runs. Yeah. Yes, and I'll hand you over to my fellow colleague Mubarak Ahmed Saab. जज़ाकल्लाह मामू साहब, शुक्रिया। पहले ओवर का हाल आप जान चुके हैं। नाजरीन, मसरूर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन है। आज सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। इंशाल्लाह लाइव जो है वो हम इस ग्राउंड से आपको तल्लत हैं बॉलर नए जो अटैक करेंगे। राफे ने फेस किया था। राफे जज्जा हैं बैट्समैन एक नॉन स्ट्राइक पर, और बिलाल हैं दूसरी लेफ़्ट हैंड साइड पर जो लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है स्ट्राइक पर। बॉलर इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं तल्लत हैं। चार का मजमूई स्कोर है इस नबील साहब पहले ओवर के बाद। और शॉर्ट पिच बॉल थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर रही, ख़तरनाक तरीके से खेल रहे थे कवर पर। बिलाल थे। एक स्कोर का इजाफा हुआ। 1 रन बनाया है बिलाल ने। फेस करेंगे राफे। बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है आज कनाडा और इंग्लैंड के दरमियान। दोनों ही टीमें बहुत ही बैलेंस और यंगस्टर पर मुश्तमिल है। तल्लत अपना दूसरा बॉल करने के लिए तैयार हैं। सामना इस दफ़ा करेंगे राफे। तल्लत आए, अंपायर को क्रॉस किया, बैकफुट पर जाकर खूबसूरत कवर ड्राइव किया है, और ये 4 रन। बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश की बॉल के पीछे, लेकिन थोड़ा तेज़ था बॉल, नाकाम रहे रोकने में। पहली बाउंड्री इंग्लैंड के लिए राफे की तरफ से लगाया गया कवर ड्राइव। 4 रन का और इजाफा किया राफे ने अपनी टीम के लिए। टोटल स्कोर नहीं आ रहा है अभी तो। 9 है। 9 है। अच्छा 9। मैं कर रहा हूँ। अगली बॉल क्लियर, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड बॉल। अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल, और स्निक का अपील की थी तल्लत और कीपर की जानिब से। अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल। 1 स्कोर और मिला है वाइड बॉल का। हारिस हैं, हारिस शाह अंपायर। तल्लत सामना करेंगे राफे। फील्डर मौजूद हैं। 1 ही रन मिड ऑफ पर हासिल किया है राफे ने। स्कोर बढ़ता हुआ 11। 3 बॉल हुए हैं अभी तक, 1 वाइड हुआ है। और इस दफा खतरनाक तरीके से बिलाल खेले थे, स्लिप के फील्डर से कैच ड्रॉप हुआ।
फर्स्ट स्लिप पर बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था अगर नुकसान उठाना पड़ता इंग्लैंड की टीम को। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा तल्लत की जानिब से, समझ नहीं पाए पूरी तरह, बल्ला लाइन में नहीं आया, ऊपर वाला किनारा हिस्सा लिया बैट ने और महफूज रहे कैच ड्रॉप होने की सूरत में। तल्लत एक दफ़ा फिर सामना करेंगे, इस दफ़ा राफे। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, पिछले बॉल पर 1 रन बना था और ये वाइट बॉल का एक और रन बना है। 13 का मजमूई स्कोर। इंग्लैंड की टीम तल्लत है बॉलर और सामना उनका कर रहे हैं राफे। बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है कनाडा की टीम की इस वक्त तक तमाम टूर्नामेंट्स में। तल्लत और थोड़ा सा शॉर्ट पिच रहा बॉल, राफे की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ, ज़्यादा बाउंस लिया बॉल ने और सही तरह लाइन में बल्ला नहीं आ सका। कट करना चाहते थे इसको पॉइंट और गली की जानिब, लेकिन बॉल को पूरी तरह नहीं ले सके राफे जजा। तल्लत आखिरी गेंद अपने ओवर की करने के लिए आ रहे हैं। इस दफ़ा कामयाब रहे लेकिन फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा और सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन की जानिब खेले, एक ही स्कोर का इजाफा कर पाए राफे। टोटल स्कोर 14-2 ओवर के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के खेल रहे हैं इंग्लैंड की टीम। अभी तक 7 रन की एवरेज, करंट जो एवरेज है वो बनाई हुई है इंग्लैंड की टीम ने। अब आगे का हाल जो है वो महमूद मिर्ज़ा साहब सुनाएंगे आपको। जज़ाकल्लाह। Jazakallah, thank you, Baisab. A good positive start there from the UK with Rafi currently on 7 and Bilal, I believe, is on 4 at the moment. I'll just confirm that in a little while. The score is 14 without, and the bowler is Mubarak. Is Mubarak. Oh, beautifully played. Beautiful shot there by Rafi. Rafi played in the PSL back in Pakistan and is a phenomenal talent. Currently playing for I believe one of the teams in Birmingham in the UK. And that really was a classy clip. A bit of a gift, all right, from Mubarak because it was down the leg side. But everything at this point, especially in the power play, is important, all right. If you've got a good start, it sets the basis for the rest of the team. So Mubarak, after a very good first over, it gives away 4 on the very first ball. All right. So coming in from the Battle Futur road end is Mubarak. Right arm over, bowls. Oh. And that really is a glorious on drive. Absolutely glorious. That is a very classy shot from a batsman who is on top of his form. And Rafe moves on to 15 and that really is a difficult shot to hit the on drive. I know it was in the air, but at this stage with the fielders, only 2 fielders being allowed out in the power play, we've got a sort of a fly cover as one of them and the other fielder out is down at a 3rd man. In comes Mubarak, bowls. Rafi goes to cut. Didn't quite time that, but they've come through for a single. Yeah. So the score moves up to 23 without loss. 9 off the first 3 deliveries here. Very, very good start for the UK. But fortunes can change very quickly. It's very early, and Rafi's just gone to, after that dropped catch at first slip, wise words to Bilal just to say, make sure you keep your head down, make sure you time the ball and find the gaps and pick your balls to hit. In comes Mubarak, bowls to Rafi, and it's in the air, and as I suspected,
He never really. Bilal out है. Bilal never really. Bilal never really looked in form. All right, he was dropped the previous ball, and Rafa had come up to him and said to him that just take your time. All right, but Canada strike well. They've picked up their first wicket in the third over. The score now is 23 for 1. And the batsman out is Bilal. His head was all over in the air, and when he went to hit that, he really didn't look like somebody who was going to time that the way he should have. So it'll be interesting to see who the new batsman is. I'll introduce you to him in a little while. It looks. If I could just ask for confirmation from my colleagues. 56. The new batsman's name? Harawal. Harawal Wasim is the new batsman. Two right-hand batsmen here now. Canada obviously buoyed up by that wicket. Some very familiar comments. One makes two. And Warwick coming in from the Bethel to Mosque Road end. Coming in. He's now picked up 1 for 12. In comes Mubarak. Bowls. That's a lovely first shot. Just goes for a single. And great pick up and throw by the Canadian fielder. Very positive start there from Harawal. Tall right-hand batsman. Yes, 1 run. The score 24 for 1. Mubarak coming in. Rafi facing him. In comes Mubarak. Bowls. Down the leg side should be signalled wide, and is correctly signalled wide. It's been an expensive over, but he has picked up that wicket, which is, I think, the key. It's gone for 11 runs so far. कुछ नहीं है एक बॉल हुई 1 run, 2 deep extra cover. एक बना जी एक बना 1 run. So the score goes up to 26 for 1 after 3 overs. And what I will do is I'll pass you over to my fellow colleague Mubarak Saab. 26 विकेट वाइड. बॉलर 21 कौन है? तलत हैं बॉलर अपने स्पेल को कंटिन्यू करते हुए. नाजरीन 26 रन 1 विकेट खोया है. जो आखिरी ओवर अभी मुबारक का हुआ है उसने 1 विकेट ली है मुबारक ने. 8.67 की रन रेट से ये स्कोर बन रहा है. राफे सामना करेंगे तलत का. बिलाल आउट होकर गए हैं वापस और हरावल वसान आए हैं. लेग स्टंप पर पड़ी हुई इस बॉल को खेले हैं स्क्वायर लेग की तरफ. अच्छी डाइव मारी. फाइन लेग के फील्डर गए थे स्क्वायर लेग पे फील्ड करने के लिए. 1 रन का इजाफा किया राफे ने. स्कोर बढ़ता हुआ 27. सामना करेंगे हरावल वसाम. तलत और भरपूर खेलना चाहते थे. ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई इस बॉल को थोड़ी सी लो रही बॉल लेकिन काफ़ी तेज़ थी जिसको पूरी तरह
यूटिलाइज नहीं कर पाए वसाम, और बीट हुए इस बॉल पर और सीधा कीपर के ग्लव्स में बॉल, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए इस बॉल पर। नाजरीन, अब तक के जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें से 8 दफ़ा कनाडा जो है वो ये ट्रॉफी ले जाने में कामयाब रही। इस दफ़ा फ्लिक किया और ख़तरनाक तरीके से एक और ज़बरदस्त बॉल, बिल्कुल भी उस अंदाज़ा नहीं कर पाए कि वहाँ पे फील्डर शॉट मिड विकेट पर जो है वो फील्डर मौजूद है, और खेला उसको, लेकिन अनलकी रहे, सीधा फील्डर के हाथ में, और उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। घुराया साहब आए हैं, खुर्रम घुराया, नए बैट्समैन। हरावल वसाम आउट होकर वापस जा चुके हैं। Didn't really go through the shot, and he sort of timed it, but he hit it in the air. Yes. And he should have really gone. He for didn't realize actually there is fielder. I think you've got either really got to go for it, or you've He didn't really go for the shot. It was a half-hearted shot, and he hit it in the air. No, he played very well, but unfortunately didn't realize there is fielder placed. So that's why he make a mistake. Otherwise, the shot is very very good. और तल्लत आए हैं और पहली ही बॉल पर खुर्रम घुराया, भरपूर खेलना चाहते थे इस बॉल को, लेकिन बिल्कुल बीट हुए, समझ नहीं पाए इस बॉल को। किसी भी रन का इजाफा नहीं हुआ तल्लत की इस बॉल पर, और राफे गए हैं बताने के लिए कुछ कि ठंडा होके खेलने भाई, अभी बहुत लंबा गेम बाकी है। तल्लत एक दफ़ा फिर, और एक दफ़ा फिर अच्छी बॉलिंग तल्लत की जानिब से मिस हो गए, और विकेट गिरते गिरते बची, काफ़ी करीब से गई है बॉल ऑफ स्टम्प्स, और वो स्लिप के फील्डर अपने हाथ से मैयर कर रहे हैं कि इतनी करीब से गई है। लकी रहे खुर्रम के विकेट को बॉल नहीं लगा। तो स्कोर बदस्तूर 27, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और इस दफ़ा कामयाब रहे। थर्ड मैन की पोजीशन पर फील्डर मौजूद हैं, 1 रन का इजाफा हुआ। ओवर मुकम्मल हुआ है तल्लत का, और नाजरीन इस वक्त जो सूरत हाल है, 7 रन की एवरेज से जो स्कोर बना है 28 टोटल मजमूई स्कोर है 4 ओवर के इख्तिताम पर इंग्लैंड का। राफे हैं बैट्समैन क्रीज पर, और खुर्रम घुराया, दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। आगे का हाल मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब आपको बताएं। It's still Mubarak. The score's 28. For those who don't know it, Khurram plays in the Hertfordshire Premier League, and he's a phenomenal striker of the cricket ball. I think he was just being a bit tentative, all right, but nothing to be taken away from Tallat's bowling, all right. He's getting some beautiful away swing, as you can see, and the conditions are helping him, being overcast here today. So first ball there, played by Khurram, all right, straight to cover, no run. Mubarak is the bowler. Slight change in the field here now. Mubarak is bringing up his mid on, and the two fielders, in comes Mubarak, bowls,
down the leg side, and that's a wide. I think that's the third wide Mubarak's bowled. That's the third wide Mubarak's bowled in his spell, short spell this morning, and wides are critical in this. Every single run matters. I think the game is beautifully poised at 29 for 2 or 4 overs. In comes Mubarak. Bowls. I heard 2 clicks there. I heard 2 clicks. 2 clicks and it's a single. I heard 2 clicks. All right. He hit the bat. So quite rightly, no, it's been signalled a leg by. That's interesting. I thought it had hit the bat, but the umpire quite correctly has signalled a leg by, and the game moves on. All right. The umpire is from Germany, and Yasser. Been a phenomenal captain of Germany in the past. I remember playing against him in many years ago. He's now providing some great officiating. In comes Mubarak. Bowls. Beautiful clipped. That really was a nice clip. Yeah. 4 runs. 4 runs there. Just clipped over square-legged. Rafa again looking very, very good. He's got 22 off 13 so far this morning. The score's 34 for 2 after 4.3 overs. The bowler is Mubarak, who's currently got figures of 1 for 20 in his 3rd over. In comes Mubarak from the Bethel Fatu Mosque Road end. Comes in, bowls, and nicely clipped by Rafa to short square leg, and that's just a single. Score moves up to 35 now. Interesting to see quite a few people now making comments on the field, and that is an interesting observation. In comes Mubarak. Bowls. Again, a very good ball. Very good ball. Brilliant backing up there. Kuram hasn't found his feet yet, but I'm sure, rest assured, having played against him in the. He's moving on field, so yeah. playing on, still on that position. Yeah. It's early days for him. All right. In comes Mubarak, bowls to Kuram, and quite sensibly he gives the field. And I think that's the key here. You've just got to keep the scoreboard ticking. All right. It's a single, and the end of the over. After 5 overs, the score is 36 after 5 overs. So I'll pass you back over to my colleague and ask him what his observations are so far of the first 5 overs. जी मेरा साहब बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा इंग्लैंड की जानिब से, लेकिन जो बॉलिंग है एज़ पर बैट्समैन्स स्किल्ड, so I can say the very good bowling, because they controlled the good batsmen. शहबाज कियानी हैं बॉलर, जो थोड़ी सी तब्दीली की गई है बॉलिंग में, तलत की जगह शहबाज कियानी आए हैं। बॉलर सामना करेंगे खुरम गुराया। नाजरीन आप देख रहे हैं कि 36 का मजमूई स्कोर है, 7 की एवरेज, 7
1.20 की एवरेज से। और फुल टॉस बॉल थी और आउट होने का खतरा, लेकिन महफूज रहे क्योंकि स्निक हुई थी बैट के साथ, इसलिए किसी भी खतरे से महफूज रहे खुरम। एक स्कोर बने 37 पहले बात थे 37 बनाता है। क्या नहीं, अच्छी बॉल स्ट्रेट बैट के साथ राफे खेले हैं, बहुत ही उम्दा शॉट ऑन ड्राइव ऑन साइड पर स्ट्रेट बैट के साथ सीधा पड़ा हुआ बॉल, कोई भी गलती नहीं की राफे ने और सीधा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन हासिल किए हैं राफे ने इस बॉल पर। Barik Saab, just notice the difference there, that he hit it all along the ground, right? Whereas earlier on, Hakawal hit it in the air. और अपील, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। और प्लेड है, 1 रन और राफे ने हासिल किया। और लेग बाई का इशारा अभी आया है, लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से। एक और स्कोर बना 42. 42. सीधे बल्ले के साथ खेले हैं, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाएंगे, कोई भी रन नहीं बना। नाज़रीन, 12वां मसरूर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज सेमीफाइनल जो कनाडा और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त टीमें दोनों। इस दफ़ा कामयाब रहे पॉइंट पर खेलने में, 1 रन हासिल किया जब तक फील्डर गेंद को हासिल करते। 1 रन हासिल किया। 43 है मजमूई स्कोर। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 5.5 ओवर मुकम्मल हो चुका है और थोड़ा सा रन रेट अप गया है। राफे ने दफाई अंदाज से इसको खेला। शॉर्ट पिच बॉल थी, लेग स्टंप पर पड़ी हुई इस बॉल को डेड किया, डेड प्ले किया और कोई भी स्कोर नहीं बना। ओवर मुकम्मल हुआ कियानी साहब का। जो सूरत हाल है 43 है मजमूई स्कोर। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। दायरे का खेल मुकम्मल हो चुका जो पावर प्ले का, और 7.17 के एवरेज से स्कोर ये बनाया है। राफे हैं एक साइड पर और दूसरे उनके साथ खुरम घुराया बैट्समैन। और जो दूसरा मैच चल रहा है दूसरी साइड पे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी का, उसमें 60 स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 60 स्कोर बनाए हैं और 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। अच्छी उनकी ये जा रही है एवरेज। तो आगे का हाल मैं चाहूँगा मिर्ज़ा साहब सुनाएं। Jazakallah Mubarak Saab, thank you very much. In the other game between Australia and Germany, Australia currently 60 for 2 after 10 overs. So both games have started off sort of on par. And it will be interesting to see how we proceed from here onwards. So after 6 overs, the score is 43 for... The new bowler is Ansar Bawana. The new bowler is Ansar Bawana. Bowling from the Battle Fatu Mosque Road end will be Ansar.
arm over, and facing him will be Kurum. In comes Ansar, bowls to Kurum. That's a much better on drive. And Kurum's now moving his feet, all right. Very wide angled stance when he's facing. I don't know if you noticed that. Rafi has the traditional stance, whereas Kurum has that slight. Yes, one run. One run to Kurum. Takes the score up to 44. Ansar Buana is the bowler from the Battle Fatu Mosque Road end. Right arm over. Currently clipped away to the square leg boundary by Rafi. The score moves up to 48 for 2. Rafi now is on 29. Ansar just adjusting his field slightly. He's now gone and placed his mid wicket to deep square leg. Now personally that was just a bad ball, all right, and that was a lovely cover drive there from Rafi, all right, but ideally you shouldn't be following the ball everywhere it goes, all right. As a bowler, the first ball was down the leg side and clipped away, and a single there to Rafi. The wide stance from Kurum, as you can see, is non-traditional but very, very effective. He's got a very wide stance when he sits at the crease. In comes Ansar, bowls again. Nice drive, and this is good cricket because Rafi is the man in, all right, and by keeping the score ticking over, all right, he's giving him the most opportunities to face as many balls as possible, and that's really, really good, shrewd cricket by Kurum in keeping the scoreboard ticking over. Ansar Buana, right arm over, bowling from the Battle Fatu Mosque Road end, comes in, backward over length again. Quality cricket, very good cricket, all right. It really is about keeping the score ticking over at this stage, all right, and you should minimize the number of dot balls you're facing because it puts scoreboard pressure, and with the boundary as well of, you know, they've already got 8 off 5, so good sensible cricket here from the UK team currently. Ansar comes in, bowls. Lovely fielding there. What fielding! He's saved a certain 3 runs there. That is beautiful fielding. Saved a certain 3 runs there, all right, and the score goes up to 52 at the end of the 7th over. Malik Sahab, what are your observations so far on the game? जी जज़ाकल्लाह महमूद साहब, मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अच्छा स्कोर एवरेज के साथ लेके जा रहे हैं इंग्लैंड की टीम। बेशक उनकी 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन इस वक्त जो 7 ओवर का खेल हुआ है उसमें अच्छी स्कोरिंग कर चुके हैं, अच्छे रन्स बनाए हैं। शर्ट दिखाना होंदा तुसीं। I've really been impressed with Kayani Sahab. He's bowled really well, Kayani Sahab, Shabazz. I've really been impressed by Shabazz Kayani Sahab. All right, he's really looked good, and in the absence of Raza, he's really picked up the mantle and bowled extremely well. Shabazz Kayani is the bowler. Shabazz पहला बॉल
स्क्वायर लेग की जानिब खेला है। देखते हैं फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से। 2 स्कोर मुकम्मल किए इस दौरान खुरम गुराया ने। यार और अच्छी बॉल थी, इसको दिफाई अंदाज से खेले खुरम। अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, थोड़ा सा मिसफील्ड किया और ओवर थ्रो का एक और स्कोर हासिल किया है। दो स्कोर हासिल किए खुरम गुराया ने। छप्पन है मजमूई स्कोर इंग्लैंड का। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्कोर किया है अभी तक। 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं और 11 ओवर का खेल उनका मुकम्मल हुआ। खुरम गुराया ने लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला। 1 रन बना है खुरम गुराया के खाते में। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत ही बेहतरीन खेल को लेके जा रही है। 71 मजमूई स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनके। कियानी एक दफा फिर सामना करेंगे राफे। अच्छी बॉल थी और 4 रन। 22 का स्कोर, बड़ी अच्छी बॉल थी। राफे बिल्कुल समझ नहीं पाए, विकेट कीपर के ऊपर से बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन हासिल किए हैं। 22 के ये स्कोर थे। स्कोर बढ़ता हुआ 61। उर्दू में 61 ही कहते। तकरीबन 8 रन की एवरेज तकरीबन पहुंच चुकी है। 73 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 11.3 ओवर में। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट के फील्डर, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट के फील्डर का। ओवर मुकम्मल हुआ, कोई स्कोर नहीं बना इस बॉल पर। ओवर मुकम्मल हुआ कियानी का और इस ओवर के इख्तिताम पर 61 है मजमूई स्कोर। 7.62 की एवरेज से स्कोर चल रहा है और राफे का मजमूई स्कोर 36 है। खुर्रम गुराया उनके साथ खेल रहे हैं। शहबाज कियानी थे बॉलर। अगला ओवर जो है वो मिर्ज़ा साहब आपको हाल सुनाएंगे। Thank you, Malik Sab, that Yorker that Shahbaz just bowled was almost a perfect delivery, but how well for Rafia to get his bat onto that. That really was a toe cruncher. Lovely bowling there from Shahbaz. I'm really impressed with his bowling so far. He's been the pick of the bowlers from me. Currently in the other game, Australia are 75 for 2 after 12 overs. Put into bat by Germany. Just giving you a heads up on that game. Here at the Abbey Recreation Ground, we've got a change in bowling. We've got the new bowler, right arm off break, he looks like. In comes Sikandar, bowls. First ball, nicely placed. Good cricket there by Kuram. All right, just gives the strike back to Rafia. Exactly what I said earlier on, all right. By keeping the scoreboard ticking, it puts on a huge amount of pressure on the Canadian team. Not to say that they'll get this but easily, but
runs on the board are critical, and at this stage, the game is finally placed. In comes Sukandar, right arm off spin, bowls, clip through mid wicket. Yes, a single off the first ball and a single off the second ball as well. So the score moves up to 63. And one of them soon, I think after 10 overs, has got to take the onus, all right? With so many wickets in hand, all right? The only thing I like doing to a spinner, and I suggest it, is you've got to use your feet, all right? If you let a spinner dictate to you what line and length he's bowling, all right? That's a lovely shot. Straight for single, and you can see the Australians, the Canadians are quite happy to give the single away. It doesn't do that much damage, but it's critical. You don't have many dot balls. We've had one dot ball in this over so far. There have been 4 balls in this over, and 3 runs off it so far. In comes Sikandar, bowls. Rafe goes for an expansive shot, and beautifully executed. Down to the deep square leg boundary. That really was a classy shot by Rafe. Nice sweep shot. And that's the other thing I've noticed, all right? We haven't seen too many reverse sweeps, all right? The Canadian team were exquisite and exemplary in previous years, I remember. Especially Raza. He was very good at playing the reverse sweep. But that was a classy shot by Rafe. The score moves up to 68 for 2. Sikandar comes in. And that will be another 4. This is really good cricket by Rafe. All right. Went onto the back, went back and hit it over gully. Didn't get it in the middle of the bat, but with this outfield, it's lightning. All right, and anything once it goes past the inner circle goes for 4. Score moves up to 72 for 2. Rafe's on 38, and I'll pass you over to my colleague, Mubarak. जी स्कोर है इस वक्त रन्स जो बने हैं 72 हैं। ऑस्ट्रेलिया जो 73 पर एक खिलाड़ी आउट और हुआ है उनका, ऑस्ट्रेलिया का 12.5 का खेल हो चुका है। जुल्फ़कार जो बहुत ही अच्छे खेलते हैं 14 रन पर आउट हुए हैं। असद वसीम 24 रन पर आउट हुए हैं। उस्मान देखना पड़ेगा 10 नंबर है मोज़िन इज न्यू बॉलर MUAZIN मुआज है नए बॉलर, सामना करेंगे खुरम। ऑफ स्टंप से काफ़ी बॉल बाहर थी और वाइड बॉल का इशारा और साथ में एक स्कोर उन्होंने और हासिल किया। हो क्या कर दिया डब्ल्यू नहीं हाँ वो डाल उठता हुआ शॉट लेकिन महफूज सीधा फील्डर के पास। एक ही रन बनेगा। 76 हो गया 75 वो एक वाइड था और एक रन भी लिया था।
बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, एक दफ़ा फिर राफे की जानिब से 4 रन मिले हैं राफे को। काट शॉट और ये तीसरी बाउंड्री इसी ओवर में लगातार हासिल की है राफे ने। 3 चौकों की मदद से उनका स्कोर बढ़ता हुआ 49-49, 86 हो गया है मजमूई स्कोर। रन रेट है 8.75, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ स्कोर जा रहा है इंग्लैंड का। सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं इंग्लैंड के। कनाडा के बॉलर्स अभी तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी राफे जो सेट होकर खेल रहे हैं और अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं विकेट के चारों तरफ। उड़ता हुआ शॉट और महफूज 4 रन। एक और बाउंड्री इस ओवर में। चार चौके बजे तो एक मिस कर नहीं यार, 3 चौके बजे हैं। अच्छा स्कोर है 90 है स्कोर और राफे की 50 मुकम्मल हुई। 53 मजमूई स्कोर है राफे का। 90 है स्कोर टोटल इंग्लैंड का। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका और 9 की एवरेज से ये स्कोर बनाया है राफे और खुरम घुराया बैटिंग कर रहे हैं। आगे का हाल सुनाएंगे मिर्ज़ा महमूद। Thank you, Mubarak Sahab. Jazakallah. That was phenomenal batting. I mean, some of the square cuts Rafe hit there showed his class. I mean, Rafe came to this country and originally played for Osterley and has most recently moved to a Birmingham Premier League side. But prior to that, he'd been playing in the PSL and in Pakistan and really did show his class there. Some of those square cuts were exquisite. That last over from Moyes, by the way, was critical. It went for 18 and they're just realigning their thoughts and the captain obviously just wanting to make sure the bowlers hit their spots. As a bowler, you tend to hit just either short of a length. If you're a quickie, you may be bowling Yorkers, all right, but a good length will get hit on this ground, all right. You ideally want to be hitting the top of off, all right, in there as a bowler, and as a batsman that's hard to judge as well. Obviously, completely different as a bowler. It varies, all right. What I'm surprised to see is all we've seen is off spin. There's been no leg spin at all so far. We will see some leg spin from the UK team later on. I'm sure they have a leg spinner in their mix. All right, Usman. I think Usman is the leg spinner from the UK team. But beautifully poised. In the other game, Australia are now 93 for 4 after 14 overs. All right, so that sort of gives you an indication of how that game's proceeding. It looks like Germany are containing them quite reasonably, because at this stage the UK after 10 overs are 90 for 2. But cricket really is, and Zulfiqar was the opening batsman who was out for 14. Asad Wasim, this is the Australian team. Asad Wasim scored, he was stumped by Husnain of Zishan for 24. Usman Butt scored 25. He was caught by Mudassar of Shamsuddin's bowling. And Umair Nasir Abro was out for 8, caught and bowled by Adil Tahir. All right. Currently batting is Zuhair Khan on 4 and Zaki Ahmed Abro, who's on 10. It will be very late in Australia at this point in time for our Australian observers, because they're 12 hours, certainly in Sydney, they're 12 hours ahead of us. So we welcome them and good evening. And please do tweet or send us messages
to Majlis-e-Sehat as well. All right. So just an update there. 94 for 4 is the score for Australia at the moment. It looks like we may have a new bowler. We've now swapped ends as we do traditionally. The first 10 overs are bowled from the Battle Fatul road end, Mosque road end. And now this is from the Wicks road end. Coming in is the bowler. We will try and get the... It's Sikandar is the bowler. Okay. We'll tell you, in comes Sikandar. That's a beautiful ball. And he's got Goraya, very first ball after the break. Kuram Goraya is the batsman out. Leg before, the umpire from Germany adjudicated that to be hitting middle end off. And the new batsman in is Safwan. Shazad. I've seen his shirt number. Shazad. The new incoming batsman is Shazad. I believe he's a left-hander. Again, that breaks up the line the bowler has to bowl. All right, because previously you're bowling to a right-hand bat, and quite intelligently. I think our the viewers know about Shahzad. He's taking a very, very good shots stroke, and he's just very high. So we will enjoy that game after. Let's hope, for everybody's sake, it's a great game. That's what we're here to see, all right? And for all our brothers in Canada, in Australia, in Germany, we welcome you all. Sikandar bowling to Shahzad, comes in, and Shahzad just watches that ball go by. Outside the off stump. No score. Sikandar, after an interesting first over that went for 10, has come back well. Bowls that short of a length, and Shahzad plays that to cover. No score. What Shahzad should try to do is just try and get off strike. Mid on, mid off or back. Knock it back through them, knock it through the gaps, and that stayed low. And historically, the Wicks road end, the ball does stay low, all right? Whereas from the Bethel Fatul road end, you get a good bounce, right? Here from the Wicks end road, all right, the ball does tend to stay low. Against the wind now. Yeah, and the batsman that's a very good point, all right? With the wind bowling with the bowler, yes. It's harder for the batsman, yeah? Great shot there by Rafi. He's coming back for the second. Again, eloquently timed. Just enough pace on the ball to make sure that, he got back for the second. So, really intelligent batting by Rafi. He moves on to 55 now. Sikandar, the bowler, coming in, right arm off spin, bowling right on the penny, as they say, and bowls a really good second over. It only went for 4 runs. The score is 93 for 3 after 11 overs, and I'll let you think and give us some thoughts on the pitch conditions and how the UK should proceed. Mubarak sir. Jazakallah Mahmood sahab.
जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कनाडा के प्लेस के जो थोड़ा सा बॉल रुक कर आएगा, लेकिन बैटिंग के अंदाज से लग रहा है कि बॉल इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा पिच के ऊपर और बैट्समैन की फेवर में जा रहा है। धूप थोड़ी सी निकली हुई है। अंसर बराना वापस आए हैं बॉलिंग पर। अच्छी बॉलिंग करते हैं अंसर। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई बॉल को खेलना चाहते थे शहजाद, कामयाब नहीं हुए, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए शहजाद। 115 मजमूई स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का। 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। All Shahzad needs to do, there's a massive gap at third man. अच्छा कट शॉट, लेकिन फील्डर तेज़ी से आए थर्ड मैन की पोजीशन से, उन्होंने बॉल फील्ड किया, 1 स्कोर हासिल किया शहजाद ने। राफे सामने आए हैं। 8.29 की एवरेज चल रही है। 94 अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहेंगे इंग्लैंड की प्लेस। सेमीफाइनल के हिसाब से बड़ा अच्छा मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड की जानिब से। अच्छी बॉल थी, इसको खेला है गली में, 1 स्कोर हासिल किया राफे ने तेज़ी के साथ। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैनों के दरमियान रन लेने की कॉल पर। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के ज़ोहैर खान 6 रन पर खेल रहे हैं और ज़की अहमद अब्रो 32 पर 32 रन पर खेल रहे हैं। 12 बालों पर 32 स्कोर किया है ज़की अहमद ने। काफ़ी तेज़ स्कोरिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जर्मनी के खिलाफ। अच्छी बॉल थी अंसर साहब की और खुद ही फील्ड किया इसको, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ। उमर नसीर अब्रो 8 रन बनाकर आउट हुए। 9 बालों का उन्होंने सामना किया है, 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई है। आंसर 1 ही रन बन पाएगा यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का मैं बता रहा था चार्ट ऑफ बैटिंग। जुल्फ़कार अहमद सलाहुद्दीन 14 रन उन्होंने बनाए हैं, 16 गेंदों के सामने किया है, 3 चौके उन्होंने लगाए हैं। और असद वसीम 24 रन बनाकर गए हैं, 26 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उन्होंने लगाए। आंसर सा और ये खतरनाक थी और रन भी काफ़ी तेज़ी से लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग कर रहे हैं राफे और शहजाद, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं दोनों प्लेयर। उमर नसीर अब्रो कॉटन बॉल्ड आदिल ने किया है इनको 8 रन पे और 9 बालों का इन्होंने सामना किया। ज़ोहैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़ोहैर खान नॉट आउट हैं, 6 बालों का सामना किया है, 6 रन उन्होंने बनाए हैं। और ज़की अहमद अब्रो जो हैं वो काफ़ी तेज़ खेले हैं, 246 स्ट्राइक रेट से खेले हैं और 32 का स्कोर है उनका ज़ाती। और ज़की अब्रो आउट हो चुके हैं, उनकी जगह उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया। सिकंदर एक दफ़ा फिर और लेग स्टंप से बाहर थी बॉल, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई विकेट कीपर से। 2 रन हासिल किए, एक वाइड का और एक बाय का। तो नाज़रीन, मोहम्मद अजमल आए हैं ऑस्ट्रेलिया के नए बैट्समैन जो रिप्लेस किया है जिन्होंने ज़की अहमद ने। अच्छा खेले
खेले हैं, 32 स्कोर किए 13 बॉलों पर। अभी तक का सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो जकी अब्रो का है। 119 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 16 ओवर का खेल उनका मुकम्मल हुआ। अच्छा कट शॉट, फील्डर मौजूद हैं, एक ही स्कोर बनेगा शहजाद के लिए। सौ रन मुकम्मल किया है इंग्लैंड की टीम ने 12.1 ओवर पर। 13वें ओवर में 8.22 की एवरेज है इनकी। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के। अच्छा बॉल था, रिस्पेक्टफुली खेले हैं। शॉट मिड ऑन पर राफे, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ। सिकंदर एक दफा फिर, इस दफा फिर लेग डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल एक दफा फिर सिकंदर की जानिब से। एक और रन, 101। 12.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12वां मसरूर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। अपील और अंपायर का इशारा, लेग स्टंप से बाहर है बॉल। दो एक्स्ट्रा बॉल कर चुके हैं वाइड फेंकने की सूरत में सिकंदर। अच्छा कट शॉट, लेकिन एक ही स्कोर बनेगा। पॉइंट किए फील्डर ने, थोड़ी सी मिस फील्ड की, खतरनाक हो सकता था अगर फर्स्ट हैंड थ्रो हो जाता, लेकिन अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन शहजाद और राफे। स्कोर बढ़ता हुआ 102। 2 बॉलें इस ओवर की अभी बाकी हैं और एक और विकेट गिरी है ऑस्ट्रेलिया की। मोहम्मद अजमल आउट हुए हैं। जीशान ने बोल्ड किया है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को और बहुत तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। बहुत थ्रो काफी दूर थी और आउट होने का खतरा और आउट। शहजाद राफे वापस आ गए, लेकिन शहजाद ने नोट नहीं किया। डाइव की लेकिन स्लिप हो गए और सही तरह पहुंच नहीं पाए क्रीज में। काफ़ी अफसरदा हैं अपने इस आउट होने पर। शहजाद रन आउट हुए हैं। शहजाद, शाकिर आए हैं नए बैट्समैन उनकी जगह। अच्छा खेलते हैं शहजाद, लेकिन अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए। शाकिर आए हैं शहजाद की जगह पर। कैप्टन हैं ये इंग्लैंड की टीम के। विकेट काफ़ी बचे हुए हैं इंग्लैंड के और स्कोर उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे जिस तरह ये स्कोर जा रहा है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि किस वक्त बाजी पलट जाए। राफे सामना करेंगे सिकंदर का। दिफाई अंदाज से खेल रहे हैं, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं किया। राफे ने ओवर मुकम्मल हुआ है सिकंदर का, तो अब तक 103 स्कोर बना चुके हैं इंग्लैंड की टीम।
13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 7.92 की एवरेज से ये स्कोर बना है। शाकर किसी बाल का भी उन्होंने सामना नहीं किया और राफे ने 58 स्कोर बनाए हैं 38 बॉलों पर। और आगे का हाल जो है वो मिर्ज़ा महमूद साहब सुनाएंगे। Thank you, Mubarak Saab. In the other match, just a quick update on that. Australia currently 121 for 7 off 17 overs. Ansar Bwana is the bowler coming in from the Wicks Road end. They've done extremely well to keep the UK limited in the since the break. The UK had only scored 13 runs. That 4 is well timed because it helps them with their overall score. But since the break, Canada have come down really, really well and strong. UK are currently 107 for 4. Sharkir gets off the mark with a clip through square leg. Comes down the track and gets another run. All right, this is good thinking by Sharkir. He's being aggressive and positive. As I've always said, fortune favours the brave. The score moves up to 108 for 4. With that leg by Ansar Bwana, a well-known player for Canada, coming in from the Wicks Road end. Rafe facing. Oh, that was a beautiful ball. Absolutely pitch of a ball. Pitched, swung away, nicked the bat, and straight away Rafe, for an incredibly good knock of 58, goes with the UK now 108 for 5. Really was a quality delivery. All right, just short of a length, swung away, and Rafe was good enough to get a little nick on it, and is out for 58. The score is 108 for 5. In the other match, Australia are 122 for 7 of 17.1 overs. Projected score is around about 140 on their current run rate. Germany won the toss there and elected to bowl first. So new batsman coming in to join Sharkir. We'll tell you the name in a little while. This is the Masroor T20 International Cricket Tournament being broadcast to you live from Abbey Recreation Grounds here in Morden in Surrey. Beautiful part of the world. This is the 12th tournament taking place today. Canada, who've won the tournament on 8 occasions, won the toss and put the UK into bat. The UK were doing reasonably well, but have been knocked back since the break, with Canada picking up 3 quick wickets, and currently the UK are on 108 for 5. So Ansar is the bowler from the Wicks. I will tell you in a little. Number 20, Safwan Mansoor. The new batsman facing is Safwan Mansoor. And that first ball was down the leg side and a wide. Yeah, down the leg side. In comes Ansar. Bowls. Lovely cover drive and a misfield there. So a lucky day for Safwan. Gets off the mark with a lovely drive to mid-off. Bit of a misfield there. And Ansar won't be pleased with that either as the bowler. Rest assured. The UK do need some stability now. These two just need to get a foundation to build upon. In comes Ansar. Right arm over. Bowls.
clipped away, and that'll be another 4. The outfield is absolutely lightning. But Ansar has got off with Safwan has got off with 2 good shots. First one was mid-off. The second was a clip down to fine leg and eluded the fielder who's at short fine leg. In the other match, Australia are 128 for 7 after 18.1 overs. In comes Ansar, right arm over, bowls, and Safwan just knocks it back to cover of Rafi, who made an excellent 58. Ansar has really good figures now of 3 overs, 1 for 26. The score moves up to 117 for 5. So Sikandar to bowl his last over. सीम फेस कर रहे हैं। पेयर एक रन हासिल किया लेग बाई का ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। कितना हो गया इसको? 30 136 है मजमूई स्कोर। बैट्समैन तैयार हैं अगले बॉल के लिए। शॉर्ट पिच बॉल थी, इसको पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। ओवर मुकम्मल हुआ। 136 मजमूई स्कोर है और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। आखिरी ओवर का खेल बाकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। आखिरी ओवर है। हाँ जी 136 लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर। हाँ जी 136 लास्ट ओवर बॉलर ने हैं शम्मस हैं बॉलर। बैट्समैन नहीं वजी थे बैट्समैन 10 नंबर की शर्ट में। शॉर्ट पिच बॉल को सही तरह प्लेस नहीं कर पाए। आखिरी ओवर का खेल है। और अच्छा प्लेस किया था, रन आउट होने का खतरा, लेकिन ट्राई नहीं की। बॉलर ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि आखिरी ओवर चल रहा है, रन बन सकता था।
इस दफा अच्छा शॉट खेलने में कामयाब, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। दूसरे रन के लिए मुड़े हैं और मिस फील्ड हुई। 2 स्कोर हासिल किए इस बॉल पर। रन आउट शोर से। तीसरी बॉल है। नहीं नहीं नहीं, एक दफा फिर स्निक की आवाज आई थी। सही तरह खेल नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ इस बॉल पर। 140 हुआ। 138 स्कोर पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अच्छा शॉट, लेकिन अगेन उसी फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर, और दूसरे रन के लिए मुड़े हैं। मना किया स्ट्राइकर ने। आखिरी बॉल खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। उमर फुल स्विंग। देखते हैं आखिरी बॉल पर कितने स्कोर हासिल कर पाते हैं। और भरपूर अंदाज से खेलने हैं, लेकिन बाहर नहीं जाएगी गेंद। 2 स्कोर हासिल कर सके हैं। तीसरे स्कोर के लिए मुड़े हैं और आउट। रन आउट हो गए हैं। 2 रन बहरहाल मुकम्मल कर लिए थे। 141 मजमूई स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का, और 141 टारगेट 142 का। अभी नाजरीन यहाँ फोटो सेशन होगा। दोनों टीमों का तारफ होगा। मंसूर शाह साहब मौजूद हैं यहाँ पे, और सदर मजलिस सेहत मिर्जा रशीद साहब मौजूद हैं। उनके साथ कनाडा के खुदाम अहमदिया के सदर तशरीफ फरमा हैं। पीछे मिर्जा हफीज साहब खड़े हैं, फहीम भट्ट साहब और राना इरफान साहब। थोड़ी देर में दोनों टीमों का तारफ होगा। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने है। ये सदर साहब खुदाम अहमदिया कनाडा कल अपनी टीम के लिए तशरीफ लाए हैं यहाँ पे। मंसूर शाह साहब, मिर्जा हफीज साहब और सदर मजलिस सेहत मिर्जा रशीद साहब। लाइन अप हो रहे हैं। दोनों टीमें जो हैं वो रेडी हैं इस वक्त मेहमान खुशी से तारफ करवाने के लिए। जर्मनी की टीम आपको इस वक्त नजर आ रही है। नाजरीन ये है जर्मनी की टीम जो अभी लाइनअप आपको नजर आ रही है रेड टॉप पर। काफी पुराने प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं इसमें।
जी मैं दुआ के लिए अरे ये दोनों अंपायर्स जावेद साहब और आदल बॉलिंग अच्छी बड़े वाला काम तो रहा है। ये थे ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये सदर साहब दामल अहमदिया कनाडा, मिर्जा हफीज साहब, बस आप थोड़ा खुल जाए नाज़रीन ये जर्मनी की टीम का फोटो सेशन हो रहा है। अमीर साहब मंसूर शाह साहब के साथ। रेडी जज़ाकल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नीमा का या मसरूर नारे तकबीर अल्लाहु ठीक है इनके साथ सीधे कर इनके साथ आप आगे आप थोड़ा एक प्लेयर यहाँ से उधर जाए प्लेयर यूनिफॉर्म वाला रेडी रेडी जज़ाकल्लाह
welcome back to the match between Canada and United Kingdom. Ansar Bwana is the bowler, short of a length. You've just missed a lovely extra cover drive from Tahir in the previous delivery. Hit over extra cover for 4. Since the break, the UK were then 90 for 2. And they've subsided a little bit to 138 for 6. Some really good bowling there in between by the spinners from Canada. An appeal for leg before and not given by umpire Harish Shah. The UK moves on to 139 for 6 after 4 deliveries in the 17th over, 18th. In comes Ansar, bowls. An exquisite shot there by Shakir, extremely brave. A ramp shot is what it's called, and it's really, really innovative and executed eloquently. So 4 from Shakir brings up the score to 143 for 6 after the 18 overs. We were just having a discussion here internally, and we were saying a pass score is 160 on this ground. With the sun now coming out, that's quite a long way to go yet. But let's see. All right. It looks to me like Talat is bowling his last over. Over the years has served Canada really, really well. Talat has always opened the bowling. Bowls a lovely away swing at medium pace, and extremely talented cricketer based in Toronto in Canada. In comes Talat. Bowls from the again, that drift is what's catching players out, and I think what needs to happen is Tahir just needs to focus on giving the, if need be, all right, a single and rotating the strike. Lovely away swing by Talat. First ball was a dot ball. In comes Talat. Bowls. Clipped away, and that could be 4. Again, extremely fast outfield. Slower ball there by Talat, well picked up by Tahir. Waited for it and just clipped it back to backward of fine leg, short fine leg, to get a 4. The conditions here have now improved vastly. The UK are on 147 for 6 after 18.2 overs. The batsman is Tahir and the bowler is Talat. Talat coming in from the Wicks Road end, comes in, bowls. And a bit fortunate there that it went and hit the wicket and probably stopped a boundary. But Tahir's batted well. You know, I've first time I've seen him, and he's hit some really nice shots. All right, the one the cover drive was well executed. The ramp shot was well executed, and he's batted well. So the score moves up to 149. Australia scored 141 for 8 after 20 overs.
giving Germany a target of 142. So both matches are pretty much going to par. All right. In comes Talat, bowling. Fortunate. A fortunate miscue there, but it brings Tahir another boundary and takes the score up to 153. मेरे पास गाड़ी में एक और है, मैं लेकर आता हूँ. अच्छा, मैं भी लेता. 153. 153. Really well today. He's been very unlucky. All right, beat the bat on numerous occasions. Comes in from the Wicks Road end, bowls, flat batted shot through cover, brings Tahir a single. Brings up the score to 154 with one delivery to go in this over. Bringing some element of respectability. It's always runs on the board which count in these matches. UK were 90 for 2 after 10 overs, and they're currently 154 for 6 after 18.5. The last bowl of Talat's spell, which has been very, very good. He's bowled 1 for 29. In comes Talat, bowls. Slower ball. Well deceived. Really did deceive the batsman there. Just rolled his fingers over the ball, and it was a slower ball. And takes the score up to 155. So I see my colleague has come back, but I will carry on proceedings as he has requested. Just a little break there. Just to sort of recap, in the other semi-final, Australia were put into bat by Germany. They were 141 for 8. Bowler number 7. Shabazz Kiani. He's been the quickest bowler on display today that I've seen. Very impressive. He's only given away 15 runs in 3 overs, and that's why I said it. As soon as I saw him, I said, this lad is talented. .155 is the score. Shabazz, 3 overs, 0 for 15. 3 overs, 0 for 15. Incredible spell. In he comes. Another. I think it's a good tactic by Shakir. He uses it a lot. He loves using the ramp shot. Shakir plays in the Surrey Premier League, and very talented off spinner and captain of the UK team this year. So Shabazz, the pick of the Canadian bowlers, comes in, bowls, lovely delivery. Really nice shot by Shakir. This is going to be close. Tahir is the batsman who's been run out. I think it makes sense because we're in the last over, all right, and you've got to go for everything. So whilst he's disappointed, Tahir is the man who was run out. Tahir was the batsman who was run out. Yeah. Tahir Ahmed, batsman number 4, 04. Gets a good, rapturous recognition from his team as he comes back. And we'll tell you the new batsman when he comes in. Okay? Saqib is, I've been told.
is the new batsman. Number 18 is Aqib Mahmood. Aqib Mahmood is the new batsman, number 18. And I would suspect Shakir is going to be halfway down the track before he's even bowled the ball. 1 run was scored. 1 run was scored in that. Tahir scored 1 run. They came back, tried to come back with a second, but it was really good thinking there by Shakir, as I suspected to you, and I did say to you he would be halfway down the track before the bowler is bowled. The keeper is standing a fair way back, but I'm not surprised because Shabazz, for me, has been the pick of the bowlers for the Canadian team. He's bowled 0 for 17 off 3.3, which in T20 terms is a really good performance. Right arm quick. Shakir is the batsman facing. 2 balls left, I believe. That is really good delivery. Absolutely beautiful bowling. Shakir had to go for it. I mean, with only a couple of deliveries left, he had to go for every shot. Good knock there from the UK captain. Scored 17 off 17 deliveries. Number 8 is the new batsman in, who is Usman Tahir. Usman Tahir is the new batsman. Usman Tahir is the new batsman. You see, for those of you who can see now, the sun's out, it's not overcast, and conditions are really suitable for batting. Yeah. It's a pass score. You never know. Cricket is a funny thing, and if they hit the right spots and bowl well, I think the UK could give Canada a really good game here. It's beautifully poised. A couple of deliveries to go. Shabazz is the bowler. Gayani bowls right in the block hole again. I mean, that is the beauty of his bowling. He's bowling at pace and he's putting it right in the block hole. All right. Couple of ways to counter that is either put him off his line by stepping outside your crease, all right, or you've got to be really brave like Shakir was doing, and he was using the ramp shot, all right, because it's full of a length and it's hard to dig out. If you stay in your crease, all right, he's going to pick his spot 9 times out of 10, as he's done again. So that was the last ball of the match. The UK have scored 160 for 8. Canada really pleased with their performance, you know, geeing up their bowlers and the team. High fives all around. They've done extremely well, I think, in this match. I'd sort of, I'll be interested to get Mubarak Saab's comments, but I'd sort of said 180 was a pass score. All right, they've scored 160, but anything can happen in cricket. And it achieved, you know, they was thinking about 150-60, so they had that target. I think they will manage this target very easily. It's my opinion. I don't know exactly. This is cricket, so anything could be happen in this game. You see, the change has been, you see now the sun's come out, all right? Yes. The ball earlier on in the morning was swinging around. It's favoring the batsman, actually. So hopefully next batting is easy rather than the first batting, because there was a very moistured that pitch we saw in the morning. So it's a bit difficult pitch in the morning, but in afternoon, I think it will be very easy
to play for batsmen. Thank you, Mubarak Saf. Really quality bowling there by Shabazz. I mean, I was speaking to the Canadian team earlier on, and they've got some really quality players in their team. I mean, one of their lads, Yasser Mahmood, who's coming in later on, played under 19s World Cup. And so is a quality bowler. I've seen him bowl incredibly well. Again, Tasif, the opener, very, very talented. So it'll be interesting to see how they go on. All right. So should I pass this over now? No, you can carry on because I just arranged the interviews. So okay. I'll go to the call Sadar Saab Khudam Al-Ahmadiyya, Canada, and Naib Amir Saab, UK. So you have to carry on this commentary. So I will come and join you. Okay. No oh yeah. जी नाजरीन, हमारे साथ
मौजूद हैं नायब मीर साहब मंसूर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, और हफीज़ साहब यहाँ सदर खुदाम अहमदिया कनाडा, आगे आ जाए थोड़ा सा, मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे इनके व्यूज़ लें और अपने नाजरीन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुहैया करें। मंसूर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए टाइम निकाल के, और टीमों को आपने माशाल्लाह अपनी दुआओं से भी नवाजा। तो अपने तासुरात हमारे नाजरीन के लिए इस टूर्नामेंट के बारे में जो भी आप कहना चाहें थोड़ा सा कर दें। मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जीती है वो इस दफ़ा मौसम है। मौसम बहुत खुशगवार रहा और सारी टीमें जो हैं, कोई बारिश वगैरह नहीं हुई और सारी टीमें जो हैं अपना अपना मैचेस जो हैं पूरे उन्होंने मुकम्मल किए। और ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि इस दफ़ा कोरोना ख़त्म हुआ है और इस दफ़ा मौसम खुशी होती है कि टीमें जो हैं उन्होंने अपनी जो भी बैटिंग या बॉलिंग वगैरह उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया है इस दफ़ा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मंसूर साहब। एक सवाल पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि आप अपने दौर में कौन सी जो है वो खेल जो है वो खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी, अगर उसके बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। बचपन में क्रिकेट ही खेलता था, लेकिन उस वक्त कनाडा की टीम नहीं होती थी माशाल्लाह। अब इसका मतलब कि आसानी से जीत जाते थे आप। अच्छा, कनाडा की टीम ना होने की सूरत में। जज़ाकल्लाह। ये मंसूर शाह साहब ने एक पैगाम भी दिया है कि दबे लफ्ज़ों में कि कनाडा की टीम माशाल्लाह किसी को जीतना मुश्किल से ही देती है, इसलिए थोड़ा सा दूसरों के लिए खेलना मुश्किल है। गाय साहब, अपना सदर खुदाम अहमदिया मौजूद हैं कनाडा के, क्या कहेंगे इस बात के ऊपर आप, इस तासर पर? मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैच खुदा ताला का फजल है, खलीफा वक्त की दुआएं हैं कि कनाडा इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब होती रही है। और अभी इंशाअल्लाह तो उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल फरमाए। लेकिन ऐसा कोई कह लें प्लेयर्स का कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैच खुदा ताला का फजल है कि, और यूके वालों की मेहमान नवाजी है कि जब भी हम आते हैं तो हर लिहाज से हमारा ख्याल रखते हैं। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह यूके जमात का। और मेहमान नवाजी भी करते हैं, ट्रॉफी भी दे के भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बहरहाल फिर हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हमारी टीम वहाँ जाए तो आप भी मेहमान नवाजी का यही उसूल अपनाएं। जज़ाकल्लाह। हफीज़ साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, हर टूर्नामेंट में मौजूद रहते हैं, तो आपके तासुरात बड़े अहमियत के हामिल हैं तमाम टूर्नामेंट्स के बारे में। 8 दफ़ा ये हमसे ट्रॉफ़ी लेके जा चुके हैं, या इनके कहने पर हमने इनको ट्रॉफ़ी दी है, जैसे भी आप कह लें, क्या कहेंगे इस सारी सूरत? दरअसल चूँकि हम तो इंतज़ामिया कमेटी में हैं, तो हमारे लिए तो सारी टीमें बराबर हैं। वो यूके जीते, वो कनाडा जीते, हमारी सारी अपनी टीमें हैं। तो हमारी ठीक है, एक चूँकि हम यूके से हैं, हमारी हमदर्दी होती है, लेकिन हमें कोई भी टीम जीते उतनी ही खुशी होती है। तो कोई इसका साथ लगाव वाली बात नहीं है, सब टीमें हमारी अपनी हैं, जो भी जीतेगी हमें खुशी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जमात जो है वो एक ख़ानदान की तरह है और एक फैमिली की तरह है। हमें खुशी भी साझी है, हमारे दुख तकलीफ़ भी साझे हैं, हमारी दुआएं भी एक दूसरे के लिए साझी हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से और उनके कौल के मुताबिक इमाम वाली जमात में शमूलियत इख्तियार करने का या जो है वो शर्फ़ जो मिला है। तो अभी मेरे साथ महमूद साहब मौजूद हैं जो इंग्लिश कमेंटेटर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी तासरात इंग्लिश में जो है वो ले लें। Jazakallah Mubarak Sab. Assalamu alaikum to all of our viewers from across the globe. We're very fortunate here that we have got some really good dignitaries. Ahlan wa salam wa marhaba. Assalamu alaikum Amir Sab. If I could start off with you first. What's been your experience of being here in the UK and this whole concept of the tournament? Jazakallah. For Canada Jamaat, it's not only the tournament that we come here to participate. The most important thing, whenever the announcement comes that this year UK will be holding this tournament under Majlis-e-Sehat, the most important thing for us is that our Khudam will be sitting in the presence of our Khalifa Waqt. So
anything organized by Majlis-e-Sehat UK is a great benefit for our Khudamul Ahmadiyya, our youth in Canada. We look forward to these opportunities that we get some time that our Khudam can spend in the presence of our beloved Hazur. So like yesterday, we had that blessed opportunity to attend the Friday's prayer as well behind Hazur Anwar. So inshallah ta'ala we'll get this more opportunities. We are very thankful to Majlis-e-Sehat for extending this invitation to us. Alhamdulillah, it's an excellent tournament overall. Jazakallah, thank you. As one of the organizers of this tournament, all right, if you could give us some concept of the amount of work and the backroom staff that are involved in this. Yes, actually, I think for Rana first to say, because I am not as the regular in this committee, so please this question to Of course. So, yeah, Assalamu alaikum warahmatullah. Yeah, by the grace of Allah, this year we used 4 venues and we tried 4 new grounds, although they were a bit away from this venue. And by the grace of Allah, the standard of cricket, standard of wickets was brilliant, and all the team they liked it, especially the Chiswick one and Barnes ones. So they say for today we have another alternate arrangements in Borden near Islamabad, but the final will be here today. Jazakallah. And Masroor Shah Sahab, we're honored that you're here with us today. All right. Yes. Could you give us some experience and some thoughts of your experience of this tournament and what you've enjoyed most about it? Yeah, I just wanted to say, to Sadr Saab, that people who come from Canada, they travel very light in the aircraft, so we give them a trophy, just to balance up the aircraft. But I think it's a wonderful occasion. So many people participating in it. And all of them praying to Allah, to help them win. So this is a brilliant tournament. And that so many teams are participating in it. So many teams have come from so far away: Australia, New Zealand, Canada, America. And so this is a huge opportunity for all of us to get together and be brotherly to each other. They say, I was listening to recently to a commentary about Pakistan, and they were talking about Imran Khan and not having the sportsman spirit, but this is true sportsman spirit down here, and you see everybody, working together, and this is the brilliant part of this sport. It's very early in Canada. Do you have any thoughts on the UK team have scored 160, all right? Any messages back for your brothers in Canada? So please continue your prayers. Inshallah ta'ala, Ahmadis will win, inshallah. So both teams are Ahmadis, so inshallah. Right, I'd like to thank all the people here, especially Mubarak Saab, who's been doing commentary here now with me for many years, but he's been by himself this year. And so for 6 days, I really want to thank him for the amount of effort and hard work, and to all the people here who've been kind enough to join us this morning. And we look forward to following on with the second innings shortly. जज़ाकल्लाह सन जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशली आप सब भाइयों का, राना साहब, मंसूर शाह साहब, सदर साहब, मिर्ज़ा साहब, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को अपनी खूबसूरत बातों से और तजर्बात से जो महसूस किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सनल जज़ा अपने टाइम का, जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको ग्राउंड में दोबारा वापस लिए चलेंगे और जैसे ही ये मैच शुरू होता है हम इंशाअल्लाह ताला आपको इसका हाल जो है वो बराह रास्त बताते चलेंगे। तब तक के लिए हम कमेंट्री बॉक्स में वापस जाते हैं और जो गुज़श्ता टूर्नामेंट्स हुए हैं हम कोशिश करते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया करें और ताकि जो तमाम टूर्नामेंट पिछले हुए हैं उनकी याद ताज़ा रहे और उनकी याद ताज़ा हो जाए। जज़ाकल्लाह। हम चलते हैं अंदर कमेंट्री बॉक्स के लिए अंदर। जज़ाक
जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कनाडा की टीम जो है यहाँ पे खेल रही है, वो अल्लाह के फजल से 8 दफ़ा ट्रॉफ़ी जो है टूर्नामेंट की 12 टूर्नामेंट में से 8 दफ़ा ट्रॉफ़ी जो है वो कनाडा के हिस्से में आई और वो ट्रॉफ़ी जीत के गए हैं। $99 and 07 जाएगा, फिर पता लगेगा कौन जा रहा है स्ट्राइक। शहबाज क्या नहीं स्ट्राइक थे, नॉन स्ट्राइक ते हैगा तौसीफ अहमद। ये ले आप पहला ओवर करें, मैं ना और नंबरिंग कर लूँ। शहबाज क्यानी है जे स्ट्राइक ते नॉन स्ट्राइक ते हैगा तौसीफ अहमद। 18 नंबर है ना, आगे बोएगा ना बॉलर पे, नहीं उस्मान ताहिर है, उस्मान ताहिर है बॉलर। तुसी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ। Welcome back to the Abbey Recreation Ground, where the UK put a respectable target of 160 in their 20 overs, a little bit below par, I would say. But conditions were challenging this morning. All right, overcast, ball was swinging a lot. There is still a little bit of swing in the air. Bowler number 8 will be the first one open. Usman Tahir, who bowls a mixture of off spin and a few leg breaks in between as well, is opening the bowling for the UK. And facing for Canada will be Shahbaz Kayani and Tawseef Ahmed. All right. I was really impressed with Shahbaz. I thought he was the pick of the bowlers. So facing will be Shahbaz Kayani. And at the non-strikers end will be Tawseef Ahmed. The run rate is just below 9. It's 8.94. But extremely lightning outfield, and let's see what happens. I think the match changed after 10 overs. The UK were at 90 for 2, and then there was, after the fall of the wickets of this is now poised beautifully for us. Usman just getting ready. First ball comes in, skip and a jump, right on the penny, dot ball. Great start there by Usman. Very important, all right, to get the ball, as they say, right on the penny. In comes Usman, bowls, off run, down the leg side, will be considered a wide. Got away with that actually, because that was a free hit down the leg side, but in comes Usman, bowls, and a shot through mid wicket for 4 runs. 5 in total. 5 in total. 1 and then a 4. In comes Usman. And I'm quite surprised, that with the conditions being what they are, that they start off with an off spinner. As you could see with Canada, they had medium pacers bowling, all right, with the new ball, and you've got to take that into account, all right. That the off spinners came on later on, so an interesting tactic deployed by
the skipper, Shakir. But let's see what it's early days, all right, and let's see what happens, all right. But Shabazz was some beautiful shots, all right, over square leg and mid wicket. The first one was a bit of a hoik, but the second shot was very good. In comes Usman, bowls to Shabazz, beats him outside the off stump. That was a much better ball, much better ball. Number 7, I just want to check, is Shabazz. Shabazz Kiani. And the crowds are now being a bit vociferous. And slowly the weather is improving. Played off the back foot. Usman's first over went for 9. There were 2 4s in that first over. The score should be 9 because he hit a 4 to square leg and he hit a 4 to extra mid wicket. It should be 9 after the first over. There were definitely 2 4s in the first over. मेरे हिसाब ना 9 है स्कोर नहीं 13 स्कोर नहीं एक्चुअली उसने वाइड भी दी थी हाँ एक वाइड भी थी सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 से 5 से आ गया ना कितने रन हुए हैं वो अभी बताते हैं जी नाजरीन आकिब हैं बॉलर पहली बॉल पर और अच्छा शॉट मिस फील्ड हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर जी बहुत ही खूबसूरत 4 रन हासिल किए हैं पहली बॉल पर आकिब रन अप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आकिब का जी हाँ जी ठीक ओके आकिब की पहली बॉल पर 4 रन बने हैं और दूसरी बॉल डॉट दिफाई अंदाज से खेले हैं आकिब 99 तो सीफ सामना कर रहे हैं आकिब का कनाडा के लिए टारगेट जो दिया गया है वो 158 का 158 अच्छी बॉल आकिब की शॉर्ट पिच रही ये बॉल पंद्रह है मजमूई स्कोर कनाडा की टीम का 161 का टारगेट है
अच्छा टारगेट खड़ा किया है इंग्लैंड ने, लेकिन देखते हैं कि कनाडा की टीम किस तरह इसको लेकर चलती है। इस दफ़ा फिर सिंगल के लिए गए हैं तेज़ी के साथ। सफ़ान है फील्डर, 1 रन बना है इस बॉल पर। और उठता हुआ शॉट पॉइंट के ऊपर से 6 रन हासिल किए हैं। वसी हैं बैट्समैन। वसी ताहिर, आकिब अच्छा शॉट खेला है पिछली दफ़ा, इस दफ़ा जाने दिया कीपर के पास, डॉट बॉल रही। स्कोर काट रहे हैं ना बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, ब्लेड को ओपन करते हुए उन्होंने बहुत ही प्यारा बॉल के जोर पर जाने दिया। 6 रन बाउंड्री रन से बाहर। एक दफ़ा फिर आकिब मेरिट पर खेले दिफाई अंदाज से, पहली बॉल पर छक्का लगा, 2 डॉट बॉल किए हैं। उसके बाद आकिब का ओवर मुकम्मल हुआ। तेईस रन है मजमूई तौर पर कनाडा की टीम का। अच्छा तौसीफ हैं सामने, और अगला ओवर जो है वो हाल सुनाएंगे मिर्ज़ा महमूद साहब। माइक अपना लेना। Single there from to Tasif. Tasif, who played under 19 for Canada. All right, very talented youngster. They've just brought on board new this year, so it's great to see. Yeah, 1-1. Usman really has to get himself together here now. He's had a poor first over. In comes Usman. Bowls. And another hoik again to mid wicket. Wasn't timed. To Wasi. Yeah. Tosif facing. Usman bowling. Plays him back with a straight bat. Obviously nerves come into this, all right, so you can understand first over was a bit expensive, but in he comes, bowls, and very fortuitous just there. He got an inside edge and played a Chinese cut, as they say. 3 off the over so far. Much better over by Usman so far. Coming in, bowling from the Betel Fatur road end. In comes Usman. Bowls. Beautiful shot. Lovely shot there by Tosif. All right. Really was quality.
And one of the biggest differences I see is in the fielding. The fielding of the Canadian team was exceptional. But it's a young UK team, and I'm sure they'll learn from their experiences today. In comes Usman bowls. And the score after 3 overs is 30. Absolutely amazing start for Canada, as was expected. It'll be interesting to see if when they swap ends, whether there's a difference for them as well. We're going to have a change in bowling here. And I think it's going to be Tahir who'll be coming in. We'll confirm in a little while. Bowler number 4. And it is Tahir, who is the new bowler for the UK team. All right. I'll just confirm that a second. I think it's Tahir. Let me just confirm. Yeah, I couldn't see his name. Tahir Ahmed, number 4. Yeah, thank you. And I'll pass you back over to my fellow commentator, Mubarak Saab. जी जज़ाकल्लाह। ताहिर हैं नए बॉलर। सामना करेंगे तौसीफ। नाज़रीन 30 स्कोर है 3 ओवर के अख्ताम पर 10 की एवरेज। रिक्वायर्ड रन रेट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7.71। तौसीफ सामना करेंगे ताहिर का। पहला ओवर अपना करने जा रहे हैं ताहिर। ऑफ स्टंप से बाहर इस बॉल को वाइड करार दिया है अंपायर ने और 1 स्कोर का इजाफा कनाडा की टीम के लिए। और नाज़रीन 141 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सॉरी, पूरी टीम जो टारगेट दे चुकी है जर्मनी के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की 141 का। और दिफाई अंदाज से खेले हैं तौसीफ। 1 रन बनेगा, 1 रन हासिल किया तौसीफ ने। कनाडा का स्कोर बढ़ता हुआ 31। अभी तक जर्मनी ने 76 स्कोर कर लिए हैं और उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। और सिर्फ 5 ओवर का खेल हुआ है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है। काफ़ी क्लोज हैं मैच जीतने के जर्मनी की टीम और सिर्फ 5 ओवर हुए हैं और कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं है जर्मनी की टीम का। ताहिर एक दफ़ा फिर वस्सी हैं सामने, पॉइंट पर खेले, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। शहजाद थे फील्डर। डीप एक्स्ट्रा कवर लिया है। वस्सी के लिए ताहिर की बॉल पर, लेकिन फिर अंदर बुला लिया। ताहिर एक दफ़ा फिर, और थोड़ी सी शॉर्ट पिच रही बॉल, जल्दी थोड़ी सी की है बैट्समैन वसी ने। बल्ला थोड़ा सा पहले घूम गया बॉल आने से, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए, महफूज रहे किसी भी खतरे से। फर्स्ट स्लिप गली पॉइंट। ताहिर एक दफा फिर, और उठता हुआ शॉट ओपन ब्लेड के साथ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन हासिल किए, सॉरी 6 रन हासिल किए। बिल्कुल काफी दूर गया ये बॉल।
वसी ताहिर हैं बैट्समैन, बहुत ही उम्दा खेलते हैं कवर और पॉइंट के ऊपर। ओपन ब्लेड के साथ थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं बॉल की पावर का साथ में और प्लेस कर देते हैं बॉल को मिडल ऑफ द बैट लेकर बॉल को। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक खेलने को देखने को मिला। मिड विकेट को अंदर ले लिया गया है और एक दफा फिर वहीं पड़ी हुई बॉल को उसी तरह खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए वसी ताहिर। वसी ताहिर को बॉल कर रहे हैं ताहिर। 81 मजमूई स्कोर बनाया है जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। 5.2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। ताहिर एक दफा फिर, फील्डर मौजूद हैं, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए। ओवर मुकम्मल हुआ ताहिर का 7.69 की एवरेज दरकार है। इस ओवर में 8 स्कोर मिले हैं, एक छक्का, एक वाइड बॉल और एक सिंगल। टोटल स्कोर हुआ है कनाडा की टीम का 38 और वसी ताहिर और तौसीफ अहमद खेल रहे हैं। वसी ताहिर 11 पर और तौसीफ 8 पर। आगे का हाल मिर्ज़ा महमूद की तरफ। Zakraka Barak Sab, what a shot by Wasi Tahir, all right. But the only thing I would sort of question is that if you haven't got that pace, all right, and you're bowling half volleys to batsmen in the power play, you're really going to struggle, all right. So, you know, if you haven't got the kind of pace that Shahbaz Hayani showed us earlier on, all right, I would have thought it would have been better to bowl just short of a length. When you bowl a half volley, as you could see, Wasi hit an amazing shot for 6. So the score here is 38 after 4 overs. Canada really looking strong and well positioned. Similarly, in the other match, Germany have gone off to a flyer. They've scored 81 in 5 overs, which is amazing strike rate. So it looks like at present, you know, it's a Germany-Canada final from the way it looks like. But cricket can change, and now we've got the wily old Abdul Qadir coming in. I should say the wily young Abdul Qadir, all right? He's a good friend of mine. Lovely action and a beautiful bowler. Just makes the ball turn and bowls it off break, and he's got that arm ball as well. So Qadir starts off really well, but it's judged as a wide. All right, so that's interesting. In comes Qadir, bowls. Wide ball again wide. Again a wide ball. Wow. Okay. Qadir does bowl a look. It's very hard to get away. No, normally. Actually, you know, the wind is coming from there. So Yeah, that could be the wind. The conditions could be changing it. Yeah, I think with the wind blowing, all right, it could make a big decision. Lovely bowling by Qadir. It's got a beautiful action, you know, and a very experienced cricketer. All right. Qadir, left arm over the wicket, coming in. He's got a point. He's got a cover, extra cover. He's got a fielder on the fly in extra on the boundary on the offside, and he's got a fielder at mid off. Oh my God! Now that has got it. That, as we say, that shot has got air miles on it. What a shot!
completely smashed out of the ground. All right, beautiful shot there. Wasi Tahir, that's his second six of the innings. Beautiful shot. And I think they might have lost the ball as well. It was such a beautiful hit. They really did have air miles on it. Lovely shot for six. Gardner's gone for 10 here in 2 balls. And that was another great shot there. Didn't quite time it. Went to cover. It was a dot ball. Went to cover. So batsman just coming, Tosif just coming to have a word with his fellow batsman Wasi Tahir, and just telling him, look, you've got enough in this over, all right, just make sure you don't throw your wicket away. In comes Qadir. Bowls. That was a lovely flighted delivery, really was good. Wasi seems to have it in his target, in his mind, that he's going to, fortune favours the brave, and he's just going to go in there and he's going to go and try and hit every single ball out of the ground. In comes Qadir. Played a bit more cautiously and quite wisely by Wasi, who was a dot ball, went to gully. Let's see if Qadir can finish this over with a respectable ball. In comes Qadir from the Bethel Fatur Road end, bowling. And again, superb fielding by Shahzad. Saved a certain boundary there. Lovely fielding at gully. No, it was a dot ball. So at the end of the 5th over, Canada have got off to a storm. They are 47 without loss. And I'll pass you over to Mubarak Saab for his comments. जज़ाकल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद साहब। नाज़रीन, मैं दूसरी ग्राउंड में जो सेमीफाइनल हो रहा है उसका मैं हाल बताता चलूं कि 81 के मजमूई स्कोर पर 2 विकेट गिरे हैं जर्मनी के, और काफ़ी क्लोज़ हैं। 6.1 ओवर उन्होंने खेल चुके हैं अभी तक। 141 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने उनके सामने रखा है। अब देखते हैं कि वो कैसे चलते हैं। आकिब अपने स्पेल को जारी रखे हुए हैं 18 नंबर। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस बॉल पर किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ। अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल आकिब की। नाज़रीन, हमें मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन आते हैं और अपनी सजेशन भी देते हैं और मैच भी देखने का कहते हैं कि हम मैच देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मैच देख रहे हैं। बुर्किना फासो से अभी हाफिज़ अता साहब का फ़ोन आया कि हम मैच देख रहे हैं और अपने व्यूज़ का भी इजहार करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आसन अल जज़ा आप सब दोस्तों का। आकिब एक दफ़ा फिर बाहर निकले और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा आकिब की जानिब से। डॉट 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 3 डॉट बॉल फेंक दिए हैं तौसीफ को। डॉट होंगे तभी विकेट मिलेगा। और एक और डॉट बॉल
बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा आकिब की जानिब से, बहुत ज़बरदस्त। 4 डॉट पहले फेंके हैं। अच्छा शॉट इस दफा कामयाब रहे प्लेस करने में, पॉइंट पर खेले हैं, थोड़ा सा फील्डर से अवे था बॉल, नाकाम रहे रोकने में शहजाद। 4 रन हासिल किए हैं इस खूबसूरत शॉट पर तौसीफ ने। स्कोर बढ़ता हुआ 51-50 मुकम्मल की है पहली कनाडा ने। 5.5 ओवर। हारिस शाह हैं अंपायर और लेग अंपायर इस वक्त जो हैं वो यासर। सिंगल मिलेगा यहाँ पे, एक और रन का इजाफा। 5 स्कोर दिए हैं मजमूई तौर पर आकिब ने और 5 स्कोर इस ओवर में हासिल किए हैं तौसीफ ने। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बताता चलूँ। 89 स्कोर है जर्मनी का। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7.5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। 141 का टारगेट रखा है ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के सामने और यहाँ की जो सूरत हाल है 52 है टोटल स्कोर। 6 ओवर का जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है। 7.79 की एवरेज से स्कोर बन रहा है, रिक्वायर्ड है। आगे का हाल जो है वो सुनाएंगे मेरे फेलो कमेंटेटर महमूद मिर्ज़ा। Jazakallah. Thank you, Mubarak Saab. Akib bowled a really good over there. He bowled 3 dot balls, and then as soon as he gave him some width, he hit him through the point area. So that was a good, you know. After the previous over that had gone. Mahmood, just 70. asking one question, one view from you about the Abdul Qadir. What do you think? It's Abdul Qadir right now bowling from against the wind, so it's really not going to favor in the Abdul Qadir or England team. So I think Abdul Qadir should go next 10 over from the other side. What do you think? You know, if you looked at the tactics deployed by Canada, they bowled seam bowlers for the first 6 overs, yeah, from this end. Seam bowlers, all right? What do? We start off with 2 spinners, all right? So the tactics you deploy as a captain have a huge impact, all right? In the power play, for Abdul to be bowling is really hard, all right? Whereas the seam bowlers tend, I really like Qadir. You know, I've got the utmost respect for him. You know, he's a quality bowler, but yes, but bowling him in the power play, again, beautiful delivery. Absolutely right on the penny. No doubt Abdul Qadir is a very good bowler and he played all tournament, 12 tournament, Masroor International T20 cricket tournament. This time is gone on. That was a beautiful shot over extra cover. The difference I saw there was, if you noticed, he used his feet. He got to the pitch of the ball, all right? And not many of the UK cricketers were using their feet to the spinners, all right? You've got to use your feet to spinners. And that is an essential part of the game. Really lovely shot. I mean, the start that Wasia Tahir and Tosif have given them is phenomenal. Fantastic start from Canada. Players. Absolutely. Tosif hit that last boundary.
And Qadir had bowled 4 good deliveries. Yes. Yeah. So even if he can claw it back now, all right, the run rate is still close to 9 and over. So to answer your question, which you asked me, all right, if this is the right end, I say it was not. I would say in the power play, especially, it's not. Yeah, to bowl spinners is, I think. Oh, it's wide again. Oh, that's harsh. That's harsh. in another factor against the mid. Yeah, absolutely. Yeah. So let's see how Qadir gets on. All right, in comes Qadir, bowls, hit off the back foot, and Aqib in point area covers that, and let's see if Qadir can finish this off with a good. He's given away 5 so far in this over, 1 wide, and the 4. Yeah. But much better over from Qadir, much better. In comes Qadir, bowls in the air. Oh, he was unlucky. Unlucky. Yeah. Very unlucky. Yeah. Tosif is batting well. Tosif has batted for under 19 for Canada, and is a really good up and coming youngster. Phenomenal stroke play, but the one who's taken my eye today is Masroor Tahir. He's got off to a flyer. He's on 17. In comes Qadir, bowls to him. Another beautiful shot, and that one's got air miles on it as well. And as I said, it's got air miles on it, and it went for a beautiful 6 over extra cover. So that's it. Now the other thing that the other thing as a captain you should be noting at this stage, Mubarak Saab, is both his 6s were at extra cover. Yeah, as a captain, all right, you should be picking up on these, that this is his favorite area to hit. So food for thought there. और खूबसूरत छक्के के साथ इख्तिताम किया है वसी ताहिर ने लास्ट ओवर का। अब आकिब अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं। अच्छा ओवर फेंका था आकिब ने पीछे से पिछला ओवर जो फेंका था। अब देखते हैं इस ओवर में वो किस कदर कामयाब रहते हैं। मिडल ऑफ पर इन्होंने बॉल को रखा और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं बॉलिंग, शॉर्ट पिच, और उसमें काफ़ी कामयाब रहे। सामना इस दफ़ा फिर तौसीफ़ ही करेंगे आकिब का। आकिब अपनी रनिंग स्टार्ट से लेकिन अपसेट हुए थोड़े से। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ, 102 स्कोर जर्मनी ने कर लिया है। 141 को जीतने के लिए चाहिए। 2 ही विकेट उन्होंने खोए हैं और ओवर हुए हैं 8। इस दफ़ा उठता हुआ शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद हैं थर्ड मैन की पोजीशन पर। 1 रन हासिल हुआ। तौसीफ थे बैट्समैन। आकिब एक दफ़ा फिर सामना करेंगे वसी ताहिर। अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से। किसी भी फील्डर के लिए कोई भी मौका नहीं है कि गेंद को रोक सके। इतना तेज शॉट, बहुत ही बेहतरीन मिडल ऑफ द बैट खेले हैं। थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल रहा और फिर उसी तरह ओपन ब्लेड के साथ, ओपन बल्ले के साथ आराम से पुश कर दिया पॉइंट के फील्डर के ऊपर से। सीधा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन हासिल किए हैं दोबारा वसी ताहिर ने। बहुत ही खूबसूरत खेल का मुजाहरा कनाडा की जानिब से, दोनों बैट्समैनों की तरफ से। आप स्क्वायर लेग की तरफ खेले हैं, फील्डर मौजूद हैं। जब तक फील्ड करते 1 रन हासिल कर चुके हैं वसी ताहिर। तौसीफ सामना करेंगे
बहुत ही मोहतात और बहुत ही एतमाद के साथ अपने टारगेट की तरफ रवां दवा हैं दोनों बैट्समैन। कोई भी गलती नहीं कर रहे, जो भी बॉल मिलता है मेरिट पर उसको खेलते हैं। इस दफ़ा फिर बाहर जाकर गली और पॉइंट के दरमियान से खेले हैं, डाइव करके रोकना चाहते थे फील्डर राफे, लेकिन उस्मान ताहिर सॉरी कामयाब नहीं हो सके। 4 रन, एक और 4 रन हासिल किए हैं। तौसीफ थे इस दफ़ा बैट्समैन। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा दोनों बैट्समैनों की जानिब से। कनाडा की टीम अपनी प्रोफेशनल खेल का मुजाहरा करते हुए बहुत ही उम्दा तरीके से अपने मैच को लेके चल रहे हैं। कनाडा की टीम 75 मजमूई स्कोर हो चुका है और किसी भी विकेट का नुकसान नहीं। एक दफ़ा फिर उसी अंदाज से, उसी जगह पर, उसी रिजल्ट के साथ खेला है। तौसीफ ने एक और चौका हासिल किया, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर रहे इस बॉल को बिल्कुल उसी तरह प्लेस किया, गली और पॉइंट के दरमियान में से सीधा गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गया। एक्सप्रेस चौका एक और वसी शाह की तरफ से। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा। 5 बॉलें हुई हैं और 14 स्कोर बना चुके हैं इस ओवर में वसी, ताहिर और तौसीफ। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा दोनों बैट्समैनों की तरफ से। कोई भी परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं दोनों बैट्समैनों की से नज़र आई अभी तक, उनके बैट से या उनके एटीट्यूड से, कि वो कोई मुश्किल मैच खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्रैक्टिस मैच में वो खेलते नज़र आ रहे हैं। इतने पुरएतमाद तरीके से अपने मैच को लेके चल रहे हैं और यही बेहतरीन बैट्समैन का और बेहतरीन प्लेयर का यही एटीट्यूड होता है और इसी तरह खेलते हैं। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का आपको बताता चलूं कि 112 का मजमूई स्कोर कर चुके हैं जर्मनी की टीम और स्टिल 2 खिलाड़ी आउट हैं और 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 141 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। हाफ अवे अभी हैं ओवर के हिसाब से जर्मनी की टीम और टारगेट के बिल्कुल करीब। विकेट उनके हाथ में है, किसी किस्म की परेशानी उनको नहीं होगी कि वो ये मैच आराम से ना जीत सकें। बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा कनाडा की जानिब से किया जा रहा है। दोनों बैट्समैन जो हैं बड़े ही पुरएतमाद तरीके से खेलते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल ऑफ स्टंप पर जो मिले हैं वो तीनों के तीनों बहुत ही मोहतात और बहुत ही उम्दा तरीके से प्लेस किया है उन्होंने। गली और पॉइंट के दरमियान में से 4 रन हासिल किए हैं। एक ही तरह का पिच हुआ बॉल जो है उन पर सेम रिज़ल्ट के साथ 4 रन 4 रन और 4 रन, 3 चौके मारे हैं इस ओवर में। तौसीफ ने बहुत ही पुरएतमाद तरीके से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों बैट्समैन। किसी भी परेशानी का इजहार उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं मिला। आके एक दफ़ा पे और ये रिवर्स हिट करना चाहते थे तौसीफ। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल थी, कामयाब नहीं हुए इस पर, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। शाकिर आए हैं बॉल करने के लिए। 83 है स्कोर मजमूई तौर पर कनाडा का। 8 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 6.50 की एवरेज दरकार है और वसी, ताहिर और तौसीफ दोनों जमकर बैटिंग कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं जर्मनी का स्कोर बताता चलूँ। 116 है मजमूई तौर पर जर्मनी का स्कोर। दूसरे मैच में 2 खिलाड़ी आउट हैं। 141 का टारगेट अचीव कर रहे हैं। आगे का हाल मिर्ज़ा साहब।
हाँ जी पहले Thank you, Mubarak Sab. Just a quick heads up on a beautiful shot by Wasia there. All right, just smashed that over mid wicket. First ball, first ball was a wide. Second ball was a six. Yes, first ball was a wide. Second ball was a six. All right, so. We've only had one ball in this over, but 7 runs conceded already. Wasi now has moved on to 44. Phenomenal strike rate as well, going at 200%. Batting beautifully. In comes Shakir. Bowls. And I've just been informed, correction on the scoring. Wasi has actually got 50 now. Now that was a good ball by Shakir outside the off stump. Off spinner. Shakir coming in, bowling. And eloquently played. Canada have really put the the foot on the pedal, so to speak. Playing really well. In comes Shakir, bowls, and another shot should be stopped. Great piece of footwork there by Gurum Guraya, and there were 2 runs. Yeah, Gurum saved 2 runs there, fielding at mid wicket. In comes Shakir. Bowls. So the score has now moved on to 90. In comes Shakir. Bowls. And at the moment, Shakir is bowling both sides of the wicket. He really needs to try and focus. Another single there, all right. And as I think this is this will be interesting. He should have done it perhaps a bit earlier on. Rafe is coming in to bowl. Obviously one of the most experienced players in the team, having played the Pakistan PSL as well. Currently playing in the Birmingham Premier League. The score is 94 without loss, and I'll pass you over to my fellow commentator, Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह मेरा साहब ये ले लो नाजरीन 94 है मजबूरी स्कोर। राफे आए हैं बॉलिंग पर, चेंज हुई है बॉलिंग। नाज़रीन 130 जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैच का स्कोर जो है, जर्मनी ने 130 स्कोर कर लिया है, सिर्फ 11 रन के फासले पर हैं अपने। 141 का टारगेट है, 2 ही विकेट गिरे हैं। राफे की पहली बॉल पर सिंगल है, ताहिर हैं फील्डर, तौसीफ ने ये खेला है। अच्छा प्लेस किया है पॉइंट पर और 1 स्कोर बनाया शहजाद थे फील्डर। तौसीफ एक दफ़ा फिर और रन आउट होने का खतरा, लेकिन एक और चांस लेना।
राफे एक दफ़ा फिर तौसीफ हैं सामने और वाइट बॉल मिस हुआ। कीपर से भी दूसरा रन लेने के लिए वापस मुड़े हैं। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइट बॉल टोटल 3 रन मिले, 3 रन मिले हैं। राफे के इस बॉल पर राफे एक दफ़ा फिर लेग स्टंप पर पड़े हुए इस बॉल को मोहतात अंदाज से खेले हैं तौसीफ। 97 मजमूई स्कोर है कनाडा का। वसी ताहिर ने ये स्टेट खेलने की कोशिश की, बाहरी किनारा लिया बल्ले ने और थर्ड मैन की पोजीशन पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन हासिल किए हैं इस बॉल पर वसी ताहिर ने। अभी तक इंग्लैंड को कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई विकेट की सूरत में और कामयाब बैट्समैन, कामयाबी से दोनों बैट्समैन जमे हुए हैं विकेट पर। कोई भी मौका उन्होंने नहीं दिया, कोई भी चांस नहीं दिया अभी तक और बहुत ही पुरएतमाद तरीके से खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन। राफे थोड़ा सा शॉर्ट पिच रहा बॉल, बहुत ही मोहतात अंदाज से खेल रहे हैं इसको वसी ताहिर। ओवर मुकम्मल हुआ राफे का। 101 रन कनाडा ने बनाया है। 6 रन की एवरेज अभी दरकार है ये मैच जीतने के लिए। वसी ताहिर मौजूद हैं क्रीज पर, तौसीफ मौजूद हैं क्रीज पर। दोनों ओपनर अभी तक जमे हुए हैं, किसी भी खतरे को मोल नहीं लिया अभी तक उन्होंने। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और अभी वक्फा थोड़ा सा चेंज होगा। एंड लेकिन सानू फिर रलना पैंदा ना। नाज़रीन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है अभी तक 10 रन चाहिए उनको ये मैच जीतने के लिए। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। हाँ जी, 141 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया ने जो दिया है। 131 रन मुकम्मल कर चुके हैं जर्मनी की टीम। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 137 अपडेट हुआ है स्कोर अभी जर्मनी का। सिर्फ 4 रन के फासले पर हैं अपनी जीत के। जर्मनी की टीम फाइनल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, अपनी जीत के बहुत ही करीब। 137 12 का स्कोर, 12 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है जर्मनी की टीम के लिए। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा कनाडा की टीम की जानिब से। दोनों बैट्समैन बहुत ही पुरएतमाद तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जा रहे हैं। 101 रन मुकम्मल कर चुके हैं। सिर्फ 60 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए और ओवर 10 पड़े हैं। शाकिर आए हैं दूसरे एंड से। ये एंड थोड़ा सा बैटिंग के लिए मुश्किल है जिस एंड से अब खेलने जा रहे हैं और ये एंड स्पिनर के लिए काफ़ी मददगार भी है। अब देखना ये है कि पिच का कितना फ़ायदा उठाते हैं इंग्लैंड के स्पिनर्स और जो बहुत ही गहराई के साथ जमे हुए दोनों बैट्समैन हैं उनको उखाड़ सकते हैं वहां से कि नहीं। शाकिर, ओ Thank you, Mubarak Saab. Just a quick update here. The score is 102 after 10.1 overs. Shakir is the bowler, and
Wasi is the batsman, bowling from the Wicks Road end. The ball tends to stay lower at this end, all right, compared to the Betel Fatu Mosque Road end. Shakir comes in, bowls, and a beautiful shot over extra cover. Lovely shot. Wasi has been in phenomenal form today, hitting the ball. You know, he's hit 2 shots over extra cover for 6, which were eloquent and very, very exquisite. Really is a very talented young batsman, along with Tosif, who played under 19 for Canada. In comes Shakir, bowls to Wasi. Again, we've noted there the ball stayed low, but umpire, I'm just trying to think, Yasser from Germany deemed it legitimate. Now, this is what I was saying to Waxab. That is the 3rd 6 he's hit in that region, all right? And as a captain, you must be picking up on these. Soon as he hit his first 6 there, I would have put mid off, slightly more wider, all right? Because he's hit 3 6s in that. Yes, should take deep extra cover one. Yeah, it's about, you know, adapting to the conditions and seeing what the batsman's doing. Yes. So, Definitely. but you can't take away the class of that shot. Beautiful shot. In he comes. Straight shot. And straight back over their head. Beautiful shot by Wasi. 6 followed by 4. Beautiful shot. The Shakir has gone for quite a few in this over. He's gone for 14. Number 4 bowler will be Tahir, I believe. Yeah, there is no. Yes, Tahir. Tahir. But 2 beautiful shots there. I'll hand it back over to you. But it looks like Germany are on their way. They've won that first semi-final. 143 for 2 after 12.3 overs. So it looks like it's going to be a Canada-Germany final. Repeat of the first ever Masroor tournament, which Germany won. So Rafe is the bowler. All right, and I'll hand you over back to Mubarak Saab. जी नाजरीन, जर्मनी ने बासानी ये मैच जीत लिया है 9 विकेट से, 9 विकेट से, और फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं जर्मनी की टीम। राफे तैयार हैं, बैकफुट पर जाकर दिफाई अंदाज से खेले हैं, इसको किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए। इसका तौसीफ इस बॉल पर बहुत ही उम्दगी से अपना स्कोर को, रन्स को जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। 115 का मजमूई स्कोर है। 5.21 पर ले आए हैं रन रेट को, जो उनको रिक्वायर्ड है, जो उनको चाहिए। तौसीफ सामना करेंगे इस दफ़ा फिर राफे का। थोड़ी सी फील्डिंग को सेटल करते हुए राफे अपने बॉलिंग स्टार्ट से भागना शुरू किया। तौसीफ ने इसको, और ये मिस फील्ड हुई है। दूसरा स्कोर मुकम्मल किया। माइक एक ही है, एक ही माइक। हाँ, एक रन और मिलेगा, एक रन और मिला। तौसीफ थे इसको खेलने वाले। तौसीफ ने एक और रन बनाया है। वसी ताहिर सामना करेंगे राफे का इस बॉल पर। और उठता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और आउट। पहली कामयाबी वसी ताहिर की सूरत में। बेहतरीन कैच, पहली कामयाबी रफे के हिस्से में आई। वसी ताहिर ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया। वसी ताहिर थे। 72 स्कोर किया है, 72 वसी ताहिर ने। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा वसी ताहिर की जानिब से। ये पहला
शॉट उन्होंने पूरा नहीं खेला, पूरा खेल नहीं पाए मिडल ऑफ द पैड, और उसी पर आउट होकर वापस। अदरवाइज़ बहुत ही पुरएतमाद तरीके से बैटिंग की उन्होंने थ्रू आउट। 14 नंबर देखना होना चाहिए। सफ़ीरुल इस्लाम आए हैं नए बैट्समैन, सफ़ीर इस्लाम जो वसी ताहिर की जगह बैटिंग करने आए। 5.16 की एवरेज चाहिए। 118 रन बना चुके हैं कनाडा की टीम। शॉट मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए सफ़ीर इस्लाम। राफे हैं बॉलर, राफे एक दफ़ा पेयर मोहतात अंदाज से खेलने हैं मिड विकेट की जानिब। एक स्कोर मुकम्मल किया। आगे हैं फील्डर रावल हैं विकेट कीपर और बॉलर थे राफे। ओवर मुकम्मल हुआ राफे का 118। एक खिलाड़ी आउट है, राफे के हिस्से में ये विकेट आया। 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5.2 की एवरेज दरकार है। सफ़ीर 1 रन पे खेल रहे हैं। सफ़ीर ने कोई स्कोर नहीं बनाया, एक बॉल का सामना किया और तौसीफ हैं 37 के स्कोर पर। Thank you, Mubarak Saab. The UK have finally picked up a wicket. Rafi, who's been outstanding today, and I think with hindsight's a wonderful thing, all right. But that very first over, that Usman went for 11, all right, was it sets the tone for the whole match, all right. And Rafi has bowled consistently well on either side, so I mean lessons to be learned there. But your first over sets the tone for the entire match. And Usman, who's coming on to bowl now, gave away 11 in that first over. So let's hope he can bring this back and bring some respectability. But at the moment, it looks as though Canada will be facing. In comes Usman, right arm over, bowls. Or out. Umpire Yasir has given that out. Usman is the wicket taker. Right arm off spin. नहीं दूसरी। Free sir.
Harawal Vassam is the incoming batsman for Canada. Harawal Vassam is the incoming batsman. All right. UK have struck twice there. Yeah, yeah. And we UK are now, Canada are 119 for 2, but still comfortably placed. They need an additional 47 from 42 runs. Sorry, 42 runs from 47 balls. Number 66 आया है ना? 66 कनाडा का देखिए। इंग्लैंड देख रहे हैं। 66 कनाडा। Yasir Mahmood is the new batsman. A correction. In comes Usman. Right arm over. Clipped away by Yasir to mid wicket. Just a single. Single run. वो दिखा रहे हैं 119। हाँ हमारा भी 119 है। ओवर के बाद अपडेट करते हैं। जी जी ये डॉट बॉल था। In comes Yasir, bowls. Yasir is the batsman facing and the bowler is Usman. Yeah, Yasir is the batsman facing. Usman bowling. Usman finishes with figures of 2 for 1 for 18 of 3 overs. Really has clawed it back well after giving away 11 in his first. नाज़रीन 120 है मजमूई स्कोर कनाडा का। माइक सेट करना उनको माइक जो तक बटन नहीं ना चलेगा ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ तो माइक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ नहीं वो तो 99 हाँ जी यासर खेल यासर हैं बैट्समैन। सामना करेंगे अब्दुल कादिर का। कादिर बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं। बैकफुट पर जाकर इसको हल्का सा खेले हैं। शॉर्ट मिड ऑफ पर किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। यासर एक दफ़ा फिर तैयार। कादिर आए और आउट होने का खतरा, लेकिन अंपायर खामोश। स्टंप आउट का हरावल की तरफ से भरपूर एहतजाज। बड़ी ही फुर्ती से ये विकेटें उड़ाई थी। तैयार हैं। अब्दुल कादिर आए और इस दफ़ा फिर बड़ी अच्छी बॉल थी अब्दुल कादिर की। काफ़ी तजर्बा रखते हैं। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि अगर ये दूसरे एंड से बॉलिंग करेंगे तो मुश्किल पेश आएगी बैट्समैन को, और वही नज़र आ रहा है इस वक्त हम जो अभी डिस्कशन कर रहे थे कि दूसरी एंड से जो बॉलिंग है
वो यहाँ पे काफ़ी हेल्प करती है स्पिनर्स को। तो सीफ आए हैं सामने, पूरी तरह बल्ले पर बॉल नहीं आई और थोड़ा सा रन रेट अप हुआ है 6.3 का जो है वो रन रेट चला गया है 121। कादर एक दफा फिर उड़ता हुआ शॉट देखते हैं और ये 6। तौसीफ कामयाब रहे, थोड़ा सा गुड लेंथ पर पड़ा हुआ ये बॉल, भरपूर एंजॉय किया है तौसीफ ने छक्के के साथ। 127 पर चला गया है स्कोर। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा कनाडा के बैट्समैनों की जानिब से, उम्दा बैटिंग का मुजाहरा, बहुत ही पुरएतमाद तरीके से स्ट्रोक खेलते हुए नज़र आ रहे हैं कनाडा के बैट्समैन और किसी भी ख़तरे को मोल लेने से गुरेज कर रहे हैं। ओवर मुकम्मल हुआ है अब्दुल कादिर का। सत्ताईस है मजमूई स्कोर कनाडा का। नाज़रीन, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है हमें, वो 141 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को, और जर्मनी ने बआसानी 13वें ओवर में ये मैच जीत लिया है। 2 विकेट के नुकसान पर उन्होंने ये टारगेट पूरा किया बहुत ही आसानी से और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उस्मान ताहिर हैं दोबारा अपने बॉलिंग को जारी रखे हुए। देखते हैं उस्मान ताहिर किस कदर कामयाब रहते हैं दूसरे एंड से। उस्मान ताहिर, और बॉल कर दिया उस्मान ताहिर ने, बिल्कुल ब्लैक होल में बॉल फेंका और गैप बना। यासर थे, 6 बालों का सामना किया यासर ने और 2 स्कोर बनाकर वापस जा रहे हैं। तीसरी कामयाबी मिली है। अच्छा, आंसर भरवाना, आंसर आए हैं आंसर भरवाना, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आंसर भरवाना आए हैं नए बैट्समैन। अब देखते हैं कि अपनी टीम को लेकर कहां तक चलते हैं। नाजरीन, अब तक का मैच आपने देखा है, बहुत ही मज़ेदार मैच रहा है। टारगेट इतना छोटा नहीं है कि उसको इतनी जल्दी से अचीव किया जाए। बैट्समैन बड़े पुरतमाद तरीके से जो दिया है स्टैंड दिया है ओपनर्स ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिया है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह लेके चलते हैं। मेरे साथ अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हुए एक प्लेयर हैं जिनका नाम मुजम्मिल रवा से इनका ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगा कि अब तक के मैच के ऊपर इनके व्यूज़ लिए जाएं और तबसरा लिया जाए, साथ साथ कमेंट्री भी जारी रहेगी, हॉल भी जारी रहेगा।
जी अभी तक तो जो नज़र आ रहा है ये तो कनाडा इज़ ऑन टॉप, लेकिन यूके ने वापस आने की गेम में कोशिश की है, 2 आउट किए हैं उनके, लेकिन सो फार कनाडा इज़ ऑन टॉप। जी मुजम्मिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अभी तक यही नज़र आ रहा है, लेकिन क्रिकेट है, हर बॉल पर गेम चेंज हो जाती है। मैं खुसूसन आपसे ये चाहूँगा कि जो ओपनर्स वसी ताहिर और तौसीफ़ ने बैटिंग की है वो बहुत ही उम्दा बैटिंग की है और 122-23 तक लेके गए हैं, विकेट नहीं गिरा। तो उस पे अगर आप थोड़ा सा अपना तासर बयान करें। ये चीज़ ये बताती है कि वो प्लान करके आए थे और जो प्लान उन्होंने किया हुआ था अकॉर्डिंग टू देयर प्लान वो उन्होंने खेला और उन्होंने रन रेट को भी नीचे नहीं आने दिया और विकेट भी गिरने नहीं दी। तो इसीलिए कनाडा इस वक्त इस पोजीशन में है कि उनकी 2 विकेटें गिरी भी हैं, स्टिल वो अच्छी पोजीशन में है। आंसर भरवाना है, सामना कर रहे हैं उस्मान ताहिर का। उस्मान ताहिर ने बड़ा ही अच्छा ओवर फेंका है, 5 मेडन बॉल और 1 विकेट के साथ कामयाबी के साथ वो अपने ओवर को लेकर चल रहे हैं। आखिरी बॉल अपने ओवर की वो फेंकने आ रहे हैं, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। इस दफ़ा कट करना चाहते थे गली और स्लिप के दरमियान, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उस्मान ताहिर का मेडन ओवर विकेट के साथ ख़त्म हुआ। रन रेट थोड़ा सा ऊपर गया, 6.80 पर चला गया। मैं पूछना चाहूँगा कि अमेरिका की टीम्स जो हैं वो किस पोजीशन पर है इस वक्त और उनका क्या रिज़ल्ट है? जी हमारी दोनों टीमें हम क्वार्टर फाइनल में हम बाहर हुए हैं, यानी हारे हैं और पिछले सालों से बेहतर परफॉर्मेंस रही है जी। और उसके अलावा दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर फाइनल तक आए हैं। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि हमारी दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में आई हैं, तो उसके पीछे में बहुत सारी एफर्ट है जी इस टूर्नामेंट में आने के लिए और इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से हम लोग अपनी टीम्स इकट्ठी करते हैं और बड़ी एफर्ट होती है उसमें। बहरहाल गेटिंग बेटर डे बाय डे। शाकिर हैं बॉलर, सामना करेंगे तौसीफ, 1 रन के लिए खेला है मिड ऑफ पर। और जैसा कि मुजम्मिल साहब बता रहे थे कि वाक़यातन इनकी अंदरूनी मुल्क मेरा ख्याल है कि 5-6 घंटे की फ़्लाइट है, तो काफ़ी दूर दराज इलाकों में इनको लड़कों को मेरिट पर जब लेना हो तो फिर कांटेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठे करने पड़ते हैं, जो काफ़ी तको-दो का काम है। तो कोई इजी टास्क नहीं है, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल है कि एक अच्छी टीम को लेकर यहाँ पे आएँ, लेकिन उसके बावजूद ये 2 टीमें लेके आते हैं। ये इनको बहरहाल इनकी तारीफ़ करने का हक़ बनता है कि अल्लाह ताला इनको और भी तौफीक दे। और मुजम्मिल साहब जहाँ तक मुझे याद है कि ये तमाम टूर्नामेंट्स में शमूलियत इख्तियार कर चुके, एक मेरा ख्याल इन्होंने मिस किया था, बाकी तमाम टूर्नामेंट में ये शमूलियत इख्तियार की है इन्होंने। क्या मैं सही कह रहा हूँ मुजम्मिल साहब? आप ठीक कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब है कि मेरी नज़र गहरी है आप पर। जी जी बिल्कुल ठीक, सब पर। और एक और विकेट और अंसर भरवाना आउट होकर वापस गैप बनाया। शाकिर थे बॉलर। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे, एक और विकेट घुमा दी कनाडा ने 128 के स्कोर पर। जी लम्हा बलम्हा मैच क्लोज होते हुए, और हालांकि कनाडा को इतना ज़्यादा रन रेट तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो स्पिनर हैं मैच में यूके की टीम को वापस लेके आए हैं। और सिकंदर है नए बैट्समैन।
जी मुज़म्मिल आप बता रहे थे मैच के मतलब कि ये ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर गया है मैच। 4 विकेट ऊपर नीचे गिरे हैं और जज्बा जो बिल्कुल मांद पड़ गया था यूके की टीम का यकदम वापस आया है और पूरी टीम जो है वो यकजान होती हुई नज़र आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। देखते हैं शाकिर को सिकंदर किस तरह हैंडल करते हैं और भरपूर अपील हारिस शाह हैं अंपायर। बहुत ही हाँ बोलो। ये आपको एक और भी चीज़ बताती है कि प्रेशर सिचुएशन में टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं। अच्छा शॉट लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं। 1 रन लेकिन बड़े अतमाद से शॉट खेला है ये मिडल ऑफ द बैट। कनाडा की डेप्थ बैटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये बैट बहुत डीप बैट करते हैं और इनके पास अभी भी अच्छे लड़के हैं पीछे, लेकिन प्रेशर सिचुएशन सम टाइम आपको बिल्कुल चेंज कर देती है। और तौसीफ का उठता हुआ शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। एक और कामयाबी। बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे थे तौसीफ और ये मैच बिल्कुल दरमियान में आ गया है दोनों टीमों के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले जिस तरह मैंने आते हुए यही कहा था कि कनाडा इज ऑन टॉप, नाउ मैच अब तकरीबन बराबरी की सतह पे। बिल्कुल मिडल में गेंद आ गया है दोनों के। अब देखते हैं इंग्लैंड बड़ी तेज़ी से वापस खींच के ले आया है अपने पलड़े में ये मैच। अब देखते हैं कि कनाडा के जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं जो बहुत ही पुरएतमाद तरीके से खेल रहे थे। तलत मलिक आए हैं नए बैट्समैन, किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मुजम्मिल साहब काफ़ी जोशो खरोश आ गया है मैच में। बिल्कुल जी। और एक जो सेमीफाइनल चाहते हैं हम देखने के लिए। रिप्ले आपके स्क्रीन पर है, देखें ये एक बॉल पहले का, लेकिन अभी हम रिप्ले कोशिश करते हैं कि आपकी नज़र करें। बहुत ही उम्दा मैच बना दिया है इंग्लैंड के बॉलर्स ने। हम यहाँ पे मुजम्मिल साहब पहले बैठे हुए थे तो हम बता रहे थे कि जो दूसरा एंड है 10 ओवर के बाद वाला एंड, वो काफ़ी हेल्प करता है वहाँ से स्पिनर्स को। जी बिल्कुल ठीक है। और वो हमारा तज्जिया जो था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जब कनाडा बॉलिंग भी कर रहे थे, जब कनाडा वाले, तो उस वक्त भी उस साइड से उनको हेल्प मिल रही थी उनके स्पिनर्स को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तलत मलिक हैं नए बैट्समैन। इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह इस जाते हुए मैच को अपनी तरफ खींच के ले आएं। ओवर करने के लिए आए हैं अब्दुल कादिर। कादिर भाई को अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। and know him for a long time, even from Rabwa. तो कादर भाई को अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और मैंने देखा हुआ है उन्हें काफ़ी दफ़ा काफ़ी क्रूशल सिचुएशंस पे वो मैच को टर्न अराउंड कर देते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द यूके इन कैटेगरी ऑफ लेग स्पिनर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दफाई अंदाज से खेले हैं सिकंदर। तलत हैं दूसरी नॉन स्ट्राइक एंड पर। काफ़ी जोशो खरोश मैच में बहुत ही अच्छा मैच बना दिया है इंग्लैंड ने। फ्लाइटेड बॉल थी, इसको सीधा खेला है और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस वक्त मुजम्मिल साहब ये 4 रन बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। बहुत ही क्रूशल हैं जी, बहुत ही क्रूशल हैं। फील्डर ने मिस फील्ड किया और अंपायर का इशारा मुझे लग रहा है कि नो बॉल का है या
हमें कोई समझ नहीं आई अभी तक, लेकिन देखते हैं कि अगर फ्री हिट का इशारा हुआ तो यकीनन ये नो बॉल होगी, लेकिन अभी तक फ्री हिट का इशारा नहीं दिया गया। हाँ, मेरा ख्याल 4 रन का वो इशारा दे रहे थे और स्कोरर जो है वो आगे से रिस्पांस नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कादिर दिफाई अंदाज से खेले, सिंगल किया है तेजी के साथ, तल्लत आए हैं सामने। इसमें ये है कि बैट्समैन पे अगर प्रेशर है, जिस तरह 2-3 आउट हुए हैं, उस तरह फील्डर्स पे भी प्रेशर है, तो प्रेशर सिचुएशंस में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली, बेशक वो जितने एक्सपीरियंस लोग भी हों वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और मुज़म्मिल साहब ये भी है कि नफ्सियात के साथ जो है ना वो बहुत उसको दबाना, उसको उभारना, ये एक बड़ा टैलेंट है जिसका टीमें जो हैं प्लेयर्स जो है इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ भी इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है जी, वो नफ्सियात के साथ एक दूसरे को डाउन और अप करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कनेडियन जो बैट्समैन हैं अभी तक तो बड़े आराम से उन्होंने जो उन्हें चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट उसके हिसाब से ठीक चल रहे हैं। अभी उनमें कोई प्रेशर इस तरह का नज़र नहीं आ रहा इन दोनों बैट्समैनों में। तो कादिर एक दफ़ा फिर, और अच्छी बॉल मिडल और ऑफ स्टंप पर पड़ी हुई है बॉल, बाहर निकली थोड़ी सी, सिकंदर उसको समझ नहीं पाए। नाज़रीन मेरे साथ मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं, मुज़म्मिल गोंदल, रवा के लोग इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, काफ़ी पुराना क्रिकेट खेलते हैं। कोल बाज़ार कादिर, और बहुत ही भरपूर तरीके से खेल दिया है इसको सिकंदर ने, और यही तवक्को की जा रही थी सिकंदर से। लंबा कद है और पूरा बल्ला घुमा दिया स्ट्रेट बैट के साथ, सीधा बॉलर के ऊपर से 6 रन हासिल किए हैं। बहुत ही कीमती रन है ये कनाडा की टीम के लिए। क्या कहेंगे मुज़म्मिल साहब? जी बिल्कुल, ये वाला बड़ी ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत हिट, क्लीन हिट की है उन्होंने बिल्कुल सामने की तरफ। अपने बात सुनेंगे, ये ऑन है, लेकिन अगर ये इसका काम नहीं कर रहा ना तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने आपस में बात करनी है, हर एक बात जो है वो इसमें जाती है। इसके बगैर जो है मसला बनेगा। अगर बात करनी है ना इसको दबाए रखें। अच्छा, प्रेस करके होल्ड करना है, लेकिन ये सिर्फ फाइनल के लिए है। नहीं हाँ, तो लेकिन ऑन ना करें, इसलिए हमने निकाला था कि इसको वो ऑन था। हाँ ठीक है, हम टेस्टिंग के लिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, जब ऑन करें बता देना। ठीक है, फाइनल के लिए होगा सिर्फ। राफे हैं बॉलर, मुज़म्मिल साहब को तबसरा कर रहे थे। जी बहुत ही खूबसूरत हिट किया जिन्होंने सीधे बैट से, और अंपायर शहीद होते, ओ सॉरी, अंपायर को लगा बॉल बहुत ही ज़ोर से, महफूज रहे, तकलीफ़ थोड़ी सी महसूस कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ शॉट थी मुज़म्मिल साहब। हाँ जी बहुत तेज़ शॉट थी और बड़ी मिडल किया उन्होंने। अगर अंपायर ना होते तो यकीनन ये 4 रन से जी, यकीनन 4 रन। इसका मतलब उन्होंने 12वां फील्डर खड़ा कर लिया। हाँ जी, अंपायर ने भी फेवर किया जी। 3 रन सेव किए हैं अंपायर ने जी, लेकिन उसका ज़ाला काफ़ी तकलीफ से जो झील भी रहे हैं। अल्लाह ताला फजल करे जी। हाँ जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए जी, किसी भी इंजरी से अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। आमीन। सब हमारे भाई हैं। आजे 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 आजे। जी मैं अब मिर्ज़ा महमूद साहब आए हैं, मैं उनको मौका दूंगा। शरीफ रखें। Match is beautifully poised here, with the score at 142 for 5. The match. Fortunate that we've got brother Muzammil Saab here from America. Right. Welcome, assalamu alaikum, and Walaikum assalam. Thank you very much. Salam wa marhaba. Thank you. Lovely to have you. What part of the States are you from? Virginia. Virginia. Right. Right. I've spent a lot of time in San Jose. But Okay. anyway, coming back to the cricket, all right. Actually, they needed only run a ball from here, and they're playing pretty calmly right now. Yeah, yeah. And, Are you enjoying your trip here? absolutely.
Yeah, absolutely. I was very fortunate to play in the final for the USA team. I was the part of that team. That team, yeah. Right. We were fellow. Right, so that's what I could recognize. Yeah. Like, it's lovely to see you again. Right. Yeah. In comes Rafe. He bowls, and he has been bowling. He's been the pick of the UK bowlers for me. He's bowled really well, really well. The UK have gone through a bit of transition. A lot of youngsters have come in. Yeah. How has your experience been with the USA team? Yeah, they're putting their effort in the field. You could see how the young legs are behaving. Yeah. And their fielding is quite up to the mark. In comes Rafe, bowls just short of a length, but they still managed to get a single. This match is evenly poised here. I'm really surprised. I thought Canada were running away with it. Yeah, right in the middle they were. Yeah, they've lost a few wickets since then. Yes, I think you also know how the pressure. Absolutely. Players react differently. It's such a shame, my right finger was fractured when I was playing with you guys in that final, and it was a privilege to be playing for the UK team. Previously I'd been captain of the UK A team. In comes Rafe. Rafe bowls just short of a length and played back with caution. I'm just trying to look at, I think it says Sukandar Zubair is the batsman, yeah? Rafe bowling from the Wicks Road end, comes in, right arm medium. Lovely ball. Bit of outswing there, all right? Absolutely, and also the length. Yeah. He's beating him from the length. Yeah. And the batsman is looking something that pitches up, but he's just shortening his length, and that's where I think Rafe's experience is coming. You could see. So for our viewers who may not know, Rafe played in the PSL. Right. In Pakistan. He did. And when he came over here, he's played for Osterley Cricket Club, all right, in the Middlesex Premier League. And subsequently, more recently, he's been playing in the Birmingham Premier League as well, all right. So Rafe's a extremely talented player. Yeah? He is, and also experienced. Yeah. So the captain of the UK team is Shakir Ahmed. Shakir plays in the Surrey Premier League, all right, off-spin bowler. Got 17 off 17 originally. The score is 144 for 5. With 2 overs left to go, they need 17. And he's bowled him. Wow! What a turn-up. He's keeping his nerves, Shakir. As a captain. He's playing as a captain role, especially in this kind of crunch situation. Yeah. In this kind of pressure cooker situation, whoever going to hold their nerves. Absolutely, yeah. Cricket is a funny game. Absolutely. So, well. Who would have thought we'd be here today? It's. Yeah, everybody was saying after 10 overs, that the game was over. The game is over, and the Canada is. Gonna finish up the game probably next 4 or 5 overs. So the score now is 144 for 6. The new batsman in is number 21, and I will tell you who that is in just a second. The new batsman is Talat Malik. Has he? All right, okay. It's showing here. We'll correct it for you. It's showing. And the Shakir is trying to put umpire under pressure. Okay.
and it's showing us Talat Malik. 21 Talal Malik लिखा हुआ है फिर दोवां ने शर्ट पाई है So Shakir coming in from the Wicks Road end, bowls, and they'll get 2 runs for that. Yeah. नहीं है तलल मलिक पक्की गल ये पक्की गल तलल मलिक That was 2 and a single. So it was a wide ball and they ran it as well. So 2 scored. Extremely tight game here now. In comes Shakir, bowls, and that will be 4. No. There is fielder. Oh, what a great piece of fielding by Sakib. Brilliant piece of fielding. Saved 1 run. 1 run there, Akib. The second card is Honda LA17GPU. Just having some announcements. HD17 NLG BMW. Then Toyota Prius LG13SYR. The fourth one is Toyota Prius BG62WHP. Please remove these cars as soon as possible from Nursery Road parking. Otherwise, these cars will be clamped. Canada needs 12 from 9 balls. It looks like This the match match is going into the last over. Right till the last over. Yeah. So Shakir, captain of England, bowling to Talat Malik. In comes Shakir, bowls, and he's gone. He's gone. He walked outside his crease and left the crease, and it was seen as a slumping. That's what it will go down as. Yeah. I think that is the same thing since I'm sitting in this chair that I'm telling you that it's the pressure. Yeah. You know, the pressure, when teams are under pressure, the players behave differently. And that's the same thing you're seeing right now. What happens? They were absolutely cruising here. Yeah. I mean, I honestly had thought after, what was it, when were they 120 for 2? Right, in 11 overs. And they were absolutely cruising, and it just goes to show you how, you know, cricket is an interesting and challenging game. Yeah, and it can change. So, but yes, it's that pressure cooker situation, right, which creates such abnormalities. And what's the beauty about the game? Right. Yeah. So 8 ball left and 12 runs required. Right. It's not problem. 8 from 12. So 2 hits only. Right. Yeah. It's easy to say. Yes. Easy to say. Right. That's correct. Right. Whoever gonna hold their nerves, they will be come on top. We have a saying in English, all right, and it says, "Cometh the hour, cometh the man," all right. And the skipper here, I hope, will show by example, all right. So Shakir coming in from the Wicks Road end, bowling, flat batted, and Shakir is he's probably one of their best fielders as well. Yep. Exceptionally fielded, well fielded. Shahbaz Kayami is the new batsman, number 7. He was the pick of the bowlers for Canada earlier on today. Yes. He bowled with pace. He bowled his 4 overs for 18 runs, which is exceptional. But it goes. In comes Shakir, bowls. Oh, what a hit! What a hit! That's what I'm saying. It's 2 hits only. Yeah, that really was. So 1 over left, hit. 6 runs. So only 6 and required. Yeah. In 1 hour. And Tosif is getting out onto the pitch to come and speak to. He's coming onto the pitch to monitor or have some words with the 2 batsmen. In this kind of crunch situation, hitting this kind of 6 with the straight bat and the balance that you can see from the batsman, it's amazing. Yeah, and absolutely. That can also tell you that he's holding his nerves. Sure.
So it'll be interesting to see how it goes. I think there'll be an opportunity. And who's given? Rafe has been given that last over. Yep, that's gonna be a crunch over, and It's one hit. And in the last, it's one hit away, but Yeah. still, Yeah. Canadians being in a North American, I have a little bit of bias. Sure. So. Yeah. There should be two here. Excellent running. That's 4 runs required. Yeah, 4 runs and Yeah, 5 2 balls. runs. No, I had. Rafe is the bowler. Rafe. मैं निकाल देता हूँ चलें आप निकाल पहली बॉल से 2 स्कोर हुआ Yes, 2 runs to square leg. 5 वालों पे 4 रन चाहिए And they need 4 runs from 5 balls. I still think. What a match we had. In comes Rafe, bowls. Oh. He's been run out. Wow. Ran him in route and. I can't believe it. Shabazz would hit that excellent fielding 6. by He would hit that the keeper. beautiful 6. Out हो गया run out हो गया He's run out. Shabazz Kayani's run out. He just hit a glorious 6 over. I got only 4 runs Straight over the bowler's head. 4 balls, 4 runs. Yeah. I still think Canada are the favourites, though. I do, stick to my guns earlier. Yeah. Yeah, I don't want to And you can say see- that the UK is a favorite, but still, it's at this moment, Yeah. since they're 7 down, Yeah. anything can happen. But Fair enough. Yeah. Yeah. being a North American, I already told you, I have a bias for Canada. Of course. So Of course. Yeah. They're all my brothers. we all are Yeah. brothers, And- but and- still. Yeah. सही हो गया जबरदस्त हो गया press off press on that's it thank you so much it's off right हाँ इधर सेंटर में रख बस ठीक है So the bowler is Rafe, and गाने दी it's 4 of 4. Yeah. Shot through extra cover. oh my god Misfield. Yeah. oh नहीं यार Misfield, but he's got away with it. Right, he got away with it. Got away with it, which is Right. quite surprising. एक मुआज ने Yeah. लिया मुआज ने एक लिया So 3 of 3. ये 2 बन सकते थे Yeah. Yeah. So The length that Rafe is bowling right now is not letting the batsman to come underneath it. Sure. So that's another thing we have to watch here. Yeah. You know, few inches makes a huge difference. Absolutely. Yeah. बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को So really, really exciting match, worthy of a semi-final. In comes Rafe, bowls, और and he hits that in the air, और out and another run out. और out And that was the key batsman. Wow! And now I don't know if they get a single for that or not. I don't know. I don't think so. सिंगल है सिकंदर है I don't think so. We'll have to check. दूसरे रन पे आउट होया We'll have to check. वो आउट होया नया मुंडा सिकंदर ने एक के पास सिकंदर सी दूसरा केड़ा सी मुआज आउट होया एक बन लेकिन नहीं बने ना आउट हो गया खत्म हो गया नहीं वो नहीं चल रहा स्कोर ये तो कल कुछ हो So from what I've been told here, they need 2 runs from the last ball. Yeah. We could have a super over here. We could. That's going to be very exciting. Yeah, which would And be that exciting. never happened in Masroor International No, Games, no, right? it's So not that's going to be happened. very So exciting. it would be very exciting. Right. Yeah. आखिरी बॉल पर मैच चला जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था इस मैच की सिचुएशन जो शुरू से चल रही थी लेकिन नाजरीन बहुत ही ड्रामाई अंदाज से मैच जो है वो चेंज हुआ और इंग्लैंड की टीम अपने पलड़े में ये मैच खींच के ले आई वापस
अब आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए, देखते हैं क्या होता है। Again, we have a saying in England which says it's not over until the fat lady sings. All right. Right. So it'll be interesting to see. In comes Rafe, bowling, and he's bowled him. I have never seen such an exciting game as this. Amazing in scenes all here. the time in the 12 Masroor tournaments. England have won this match with just, a hope and a prayer. I really did not think this was going to happen. All right. The last over that Rafe bowled, Yeah. he holded his nerves. The way he was changing his length after every ball, it was amazing. Yeah. And they really deserve it. Yeah. And all the young lords, the young legs, they really fielded well. They made few mistakes, but overall, the way they came back, all credit goes to the UK team and their management. It was a great finish. Yeah. It was a great finish. And my saying did come to fruition. Cometh the hour, cometh the man. Cometh the man. You're Yeah. right. And that Rafe was that man. All right. That was what I'll just let my fellow commentator Mubarak Saab make some comments as well. नाजरीन, ये है क्रिकेट कि 120 तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था और 159 पर सारी टीम आउट हो गई। ये क्रिकेट है और इसमें कोई भी तबसरा जो है वो करना कबल अज़ वक्त होता है जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जा सकती। बहुत ही उम्दा मैच खेला इंग्लैंड की टीम ने, यकदम वापस आए मैच में और बेहतरीन टूर्नामेंट की टीम जो थी उसको हराकर फाइनल में जंप कर गए। जर्मनी के ख़िलाफ़ खेलेंगे फाइनल। बहुत ही उम्दा मैच खेला है इंग्लैंड की टीम ने। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुज़म्मिल साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और अपने व्यूज़ का यहाँ पे इज़हार किया, हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मुज़म्मिल साहब। करना मुश्किल है कि एक वक्त में In my 12 years, Mubarak Saab, I've never seen anything like that. बिल्कुल ऐसा हमने ऐसे मैच कम देखें। It looked, as though Canada was sailing, all right, and they were doing exceptionally well, and then suddenly, the game changed. That semi-final, we will be taking a short break shortly, and we'll be going to provide you coverage of the final a bit later on. But absolutely phenomenal performance here this afternoon. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैच नाज़रीन बहुत ही उम्दा मैच देखने को मिला है। एक वक्त था कि कनाडा के दोनों प्लेयर ओपनर्स जो हैं वो इस तरह मैच को लेके जा रहे थे कि जैसे मैच ये ख़त्म करके आएंगे, लेकिन क्रिकेट इसी को कहते हैं कि उसका कोई पता नहीं चलता कि कौन से लम्हे में मैच जो है वो कौन सी टीम की तरफ चल पड़े, बल्कि भाग पड़े। और आज यही देखा कि मैच इंग्लैंड की टीम की तरफ किस तरह भाग कर गया और यकदम जोश और जज्बे के साथ उन्होंने ये मैच खेला। और हमने जो हम कमेंट्री बॉक्स में तज्जिया कर रहे थे कि दूसरा एंड जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है और दूसरे एंड से जो भी सिंगल और डबल का खेल खेलेगा वो कामयाब रहेगा, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है जो दूसरा एंड है। बैतुल फतू एंड जो है वो बैट्समैन के हक़ में है, लेकिन जो विमिल्डन एंड जो है वो काफ़ी ख़तरनाक और मुश्किल है बैटिंग के लिए। और वही हुआ कि स्पिनर्स ने और दूसरे बॉलर्स ने मुकम्मल तौर पर अपना जो है वो
भारी रखा पलड़ा उस जानिब से और इंग्लैंड की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा इंग्लैंड की टीम की जानिब से। कनाडा की टीम थोड़ा सा जल्दी कर गई, लंबे हिट्स पर गई, लंबे शॉट पर गई, आखिरी ओवर में भी जो है वो रन्स जो हैं मिस किए, जिसकी वजह से उनको मैच से अपना हिस्सा निकालना पड़ा, अपना बाहर हो गए। नाज़रीन, जैसा कि रिज़ल्ट आपके सामने है, इंग्लैंड की टीम और जर्मनी की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। आपसे थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और जर्मनी और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान हम फाइनल जो है बराह रास्त नशर करेंगे। थोड़ा सा वक्फ़ा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा और तकरीबन 4 बजे के करीब हम दोबारा हाज़िर होंगे यूके टाइम के मुताबिक और आपके साथ रहेंगे और बराह रास्त आपको मैच जो है वो दिखाएंगे। जज़ाक